Respected all the attendees for today's program under our series Women on Wednesday. Dear friends and colleagues, we have organized this series Women on Wednesday throughout the year for the benefit, specific benefit for our uh, female chartered accountants, women chartered accountants who are in practice, who are in job, or who are in not in practice and not in job. That is, we can call them housewives. For benefit of all the female members of the CIRC, we have thought that we should organize such type of program that our lady members can directly be benefited. In this series, we have done a lot of programs for our members. In the line, we have organized today's program. The topic of the session is Professional Opportunities under the Companies Act 2013 and Startups, a way forward for new opportunities. These are very good topics and good opportunities are there for our members who are in practice as well as in job. To starting this session, first of all, I would like to welcome Chairman of CIRC in his absentia, CA Nilesh Gupta ji, Vice Chairman of CIRC, CA Atul Agrawal ji, and the man behind all the programs which has been organized under Women on Wednesday. Welcome, Atul ji. I also welcome CA Soumya Srivastav ji from Noida. She is a moderator for today's session. And most of all, I welcome Advocate CS Rima Jain ji, who will going to discuss the topic Professional Opportunities under the Companies Act 2013. And our second speaker, CA Pooja Gurwani ji, who is going to discuss startups, a way forward for the new opportunities. So I would like to welcome all of you, and most of all the attendees who are attending today's program under Women on Wednesday series. To start this session, I would like to invite our Vice Chairman, CA Atul Agrawal ji, for his welcome address. Atul ji. Thank you very much, Shashikant Chandrakar ji, Secretary CIRC, for inviting me for a welcome address. I'm taking a responsibility of our chairman as he is traveling and not able to connect you all. So on behalf of Chairman CIRC, I would like to welcome you all for your presence in the today's program. Friends, we started this Women on Wednesday series on 20th of June, and then after that we organized so many programs, especially for the women members, because we understand under this digital era, while even if you are sitting at home, then also you can perform your duties and you may get connected with the professional opportunities. The idea behind this Women on Wednesday came while we were connecting with the members, especially with the women members, and especially the women members who are outside India, who got married and settled outside India. Then we came to know that in most of the cases, they are not able to utilize their professional education. And that thing came in our mind that even if you are a housewife or you are taking a responsibility, because that is the prime responsibility for any member. So what I understand, any woman member who is taking the responsibility of the family, she is taking the major responsibility on her head. But at the same time, if you wanted to connect with your professional, connect with the profession, then again, if you take out even 3 hours in a day, then also you would be very well connected with the profession and you would be able to generate your own pocket money as well. Moreover, a few questions came in our discussion earlier also, that after marriage, women members don't get the lead. They don't come on the front. They are always being used as a second partner or a person behind the leader.
Yesterday, day before yesterday, also we were having one session, and there was a woman member from Maharashtra, Yavatmal, and her basic question was, sir, I wanted to have my own identity, but I don't get the opportunity to have an own identity. Clients are not approaching me. So the idea came in our mind, especially Nilesh Gupta ji, who is the chairman of CIRC. He came forward and said, sir, let us start this series, Women on Wednesday, and we started that series. And my thought is, while we talk about specialization, while we talk about leadership skills, not necessary that if your spouse is into income tax, then you should also go for the income tax. If you go in a different domain, let's say if your spouse is in income tax, then you may get the expertise done in GST. So definitely, as far as any question related to GST is concerned, client will approach you. So it's a time for the specialization. And what we understand in this digital era, every time you need not to go to office. While you are sitting at home, then also you can work. And keeping in view that thing, we chosen the topics for today. First is, as we discuss professional opportunities under the Companies Act 2013. Normally, we as a chartered accountant normally leave that Companies Act 2013 or Companies Act 1956, which was there in earlier years. We normally leave that, considering that it's an area for the company secretaries. But friends, I believe this is an area where we can also have our professional opportunities. Lots of professional opportunities are there. From that, as you all know, now a time is there where MSME and startups are growing like anything, and we need to understand what all professional opportunities we can take out from the startups. And for that, we have a very young member from Aga, CA Pooja Gurwani, and she is going to tell us startups a way forward for new opportunities. So friends, I on behalf of CIRC and I on behalf of C. Nilesh Gupta would like, Chairman CIRC, would like to welcome you all in the present today's series. Yes, this series was not in operation since 1st of September because of the code of conduct of ICI, especially for the election purposes. And after that, this is the first program, and we assure you, like, we are here till 20th of February. We will continue this program till 20th of February, and after that, the decision shall be of the predecessors. The decision shall be the new office bearers of the CIRC. So without taking much of the time, I request, I would like to directly hand over the charge to the moderator of the session, CA Soumya Srivastava from Noida, to start the proceedings of the session. Over to Soumya Srivastava for the proceedings of the session. Thank you so much, sir. Hello. I hope I'm audible. Yeah. Hello, everyone. I hope this interactive session finds you all in a good health and well-being. And the particular topic of the startup, a way of forward for new opportunities, this particularly seems very interesting for me because we all can see how much this area is budding, and we can see even how the kids are talking about even the Shark Tank India episodes. I mean, we all can relate to how budding this area of young mind and entrepreneurship idea is. So I'm personally very eager to have an insight on this topic by Ms. Pooja Gurwani. She is a young fellow member and a very renowned personality in the field of audit, and many more things to add to her feather. And over to you, Pooja. Without taking much time, we all are eager to listen about this topic, startup way forward for new opportunities. I just wanted to make one request to all the members. They need not to mention their membership number in the chat box, as the attendance shall be marked on the basis of their login. So there is no need to mention their name and membership number in the chat box. And as far as the question answers are concerned, I request all of them to kindly put the question answers into the Q&A box. Thank you very much. Over to Pooja. Pooja, I think you are not audible. Any technical issue? Kindly check your mic, I believe. I suggest you to kindly re-log in. Sir, if she can use a headphone for... Otherwise you can use headphone, or otherwise log in through mobile.
I Friends, hope she's not muted Hmm? from the other no, end. no, she has not been muted. No, no, not muted. She Not is on. Friends, till time Pooja is coming up with her mic, I would like to tell one thing. The role of the chartered accountant is very important, not only into the startups but also into MSMEs. And we need to understand. Yes, most of us are as of now focusing upon audit and assurance services only. But my suggestion to all my friends and professional colleagues is, let us focus on the professional opportunities which are coming up in MSME sector, the professional opportunities which are coming up in the startups also. And only one request to all of you, please don't get disheartened with the comments which are being at times asked by the people unknowingly or without any knowledge about the profession and the responsibilities which has been casted on our shoulders. So my sincere request to all of you to kindly focus on more and more professional opportunities. And these professional opportunities are available not only in India, outside India as well. We can work for export of services as well. It all depends like how we can explore the professional opportunities. That is what is more important. I think let me check with Pooja just a minute. Mr. Agrawal has actually mentioned this very righteously. And as a conservative approach, we all always see how fields can be explored only in the area of taxation or in the field of accounting or any other. But I'm sure with the abundance of many more opportunities like RERA, cloud computing, and what not opportunities we have. So I think we should explore and have that zeal that at least dive into some more plethora of opportunities, and not only to the ones which have been laid conservatively. Or I'm sure there are so many things to discuss on, and it is a very righteously said, it was a live platform which is actually would be very fruitful for the women in power in the profession, because we all know how difficult it gets to cope up with the managing responsibility of our work, home, kids, and of course the professional work. So indeed, I guess this would be really beneficial for all the people who are listening to this. And I just hope the technical glitches also gets resolved very fast. If she's, I would like to Pooja, hear few of the members who have joined this program. They were also the speaker. C. Reshma Mittalji is there, who talked about insolvency and all, what all professional opportunities are there. She is also one of the attendee. And if I see lot many other speakers are there. Hello, Yes, Yeah, yes. it's am I audible now? Yes, yes. Yeah, yes. yeah. Where is it? I guess we have Pooja ma'am also with us. Now we have Pooja ma'am. Yeah, Hello. yeah, please. Yes, yes. Sorry for the inconvenience. Good afternoon Yes. to all the members present here. Thank you, Soumya. Hello, am I audible now? Yes, yes, yes. You are Yes, audible. very much. Okay, thank you. Thank you, Atul sir, for giving me this incredible opportunity to share my views on this topic in front of all the esteemed members of the Institute of Chartered Accountants of India. I would like to start my presentation now. Is this visible to all of you? Okay, okay. It's visible. So you must all of you hear the word startup nowadays. Each and every person, every second person is. Hello. Yes, Pooja जी, quite करिए. audible. आवाज आ रही है ना क्लियर? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल आ रही है. आप ठीक है आगे. ठीक है. एक्चुअली थोड़ा डिस्टर्बेंस है, इस वजह से आई हैव कंफर्म्ड ना, ना. अगेन. Yes. यस यस. तो नाउ जैसे कि आजकल हर एक दूसरा बंदा स्टार्टअप के बारे में बात कर रहा है. एक्चुअली स्टार्टअप है क्या?
अगर हम इस स्टार्टअप का मतलब जो होता है एक लिटरल सेंस में, इसका मतलब होता है कि कुछ स्टार्ट करना, टू हैव समथिंग इन मोशन। अगर हम इसको बिजनेस से रिलेट करें, इट मीन्स कोई भी ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना, मतलब कुछ भी बिजनेस स्टार्ट करना, बी इट अ न्यू बिजनेस, बी इट यूजिंग अ न्यू टेक्नोलॉजी, कोई भी नए टेक्नोलॉजी को यूज करके आप कोई नया प्रोडक्ट या सर्विस बना रहे हैं, वो भी एक स्टार्टअप की डेफिनेशन में आएगा। या आपको एग्जिस्टिंग बिजनेस भी क्यों ना कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी मार्केट में है, अगर आप वो नया स्टार्ट करते हैं, दैट इज ऑल्सो अ स्टार्टअप। किसी भी तरीके से उसको एक नई टेक्नोलॉजी को यूज करके इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाना, मार्केट में लॉन्च करना, वो भी स्टार्टअप की डेफिनेशन में ही आएगा। अगर हम एक अच्छा स्टार्टअप करना चाहते हैं तो उसमें क्या बेसिक फंडामेंटल्स होने चाहिए जो कि हमारे एक स्टार्टअप को बहुत अच्छा बनाए। जैसे कि सबसे पहला जो बेसिक चीज है, आपका जो स्टार्टअप है, आपका जो बिजनेस है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। कस्टमर बेस उसका एक लिमिटेड रेंज ऑफ कस्टमर बेस नहीं होना चाहिए। जैसे कि एक मार्केट रीच उसकी बहुत बड़ी होनी चाहिए ताकि लार्ज नंबर ऑफ पीपल की प्रॉब्लम सॉल्व करे, ताकि उसका जो स्केलेबिलिटी है वो इजी हो जाए। मतलब अगर हम एक लिमिटेड रेंज ऑफ पीपल की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं जाके उसका एक जो रेंज है वो लिमिट हो जाएगी। तो एक कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट करने से पहले हमें एक माइंड में रखना चाहिए कि जो उसका कस्टमर बेस है वो एक वाइडर रीच हो, मार्केट रीच उसकी अच्छी हो, उसमें स्केलेबिलिटी के चांसेस हो, ताकि उसको एक अच्छे लिमिट तक, एक अच्छे पड़ाव पे पहुंचाया जा सके। अगर हम उसका जो सोल्यूशन है वो एक ऐसा होना चाहिए जिसके लिए जो कस्टमर है वो आपका पे कर सके। और अगर मतलब एक लग्जरियस नहीं होना चाहिए, नेसेसिटी होनी चाहिए, कस्टमर की नेसेसिटी सॉर्ट करना चाहिए वो एक स्टार्टअप। और अगर नेसेसिटी नहीं है तो उसकी नेसेसिटी पहले जनरेट करो। जैसे कि जियो ने हमारा जो आजकल की जनरेशन में उसने क्या किया, ऑलरेडी एयरटेल और ये सब थे मार्केट में, बट स्टिल जियो केम अप। उसने सबसे पहले आदत लगवाई फ्री इंटरनेट की। बेसिक सब जो भी नीचे से नीचे लोग जिनके पास परचेसिंग पावर भी नहीं थी इंटरनेट यूज करने की, उनको भी आदत लगवाई कि वो एक इंटरनेट को यूज करें। और उसके बाद उसने अपने प्राइजेस हाइक करे। अल्टीमेटली स्टार्टिंग में उन्होंने फ्री में देना स्टार्ट किया ताकि लोगों को आदत लगे। तो उसका जो बिजनेस मॉडल था वो था कि पहले किसी को जरूरत नहीं थी उस चीज की, बट उन्होंने जरूरत लगवाई उसमें उस चीज की। पहले सब लोगों को इस चीज का हैबिचुअल बना दिया कि हाँ, इंटरनेट इज अ नेसेसरी थिंग नाउअडेज। एंड आफ्टरवर्ड्स पीपल यूज्ड टू दैट, एंड नाउ दे आर विलिंग टू पे 400-500 per month also for that internet and free video calls and video chats. तो हमारा जो स्टार्टअप है वो ऐसा होना चाहिए कि पहला जो बेसिक प्रॉब्लम है वो सॉर्ट हो और कस्टमर को रियलाइज हो कि ये जो प्रॉब्लम है दैट इज नेसेसरी, सो वो पे करने के लिए रेडी हो, और उसमें स्केलेबिलिटी होनी चाहिए। सबसे पहला जो स्टार्टअप का अगर हम टेस्ट करना चाहें, लिटमस टेस्ट में आपको बताऊं कि हमारा जो स्टार्टअप है वो आगे विलिंग होगा कि नहीं होगा, कस्टमर उसके लिए रेडी होगा कि नहीं होगा पे करने के लिए। अगर हमने एक पायलट प्रोडक्ट बनाया, कोई भी हमारा कोई प्रोडक्ट है यूजिंग टेक्नोलॉजी, हमने उसका पायलट प्रोडक्ट बनाया, एक सर्वे करना चाहिए हमें मार्केट में, जिसमें अगर हम कस्टमर उसके लिए रेडी हो जाए उस पायलट प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, देन दिस इज अ साइन कि आपका जो प्रोडक्ट है, सर्विस आप लॉन्च करने जा रहे हो मार्केट में, वो एक अच्छा स्टार्टअप लॉन्च हो सकता है। या अगर वो पायलट प्रोडक्ट नहीं भी परचेज करता है पर वो एक एडवांस देने के लिए रेडी हो जाए आपको कि आप बनाओ, एक इंटेंट शो करे कि हाँ आप बनाओ प्रोडक्ट, मैं आपका खरीदूंगा बिकॉज इट इज नेसेसरी फॉर मी। दिस इज द लिटमस टेस्ट कि हाँ अगर आप ये लॉन्च करते हो तो आपका जो स्टार्टअप होगा वो एक अच्छी तरीके से आगे चल पाएगा, क्योंकि वो कस्टमर के लिए नेसेसरी है, वो अगर अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है उसके अंदर। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो एक स्टार्टअप के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज द टीम। जो टीम है उसकी, वो आपके गोल्स के संग अलाइंड होनी चाहिए। एक अकेले आप पूरा स्टार्टअप खड़ा नहीं कर सकते। योर टीम इज utmost important in each and every aspect of the startup, for launching it, for executing it, for planning it, and each and every aspect. So जो उसकी गोल्स हैं वो आपके गोल्स के संग अलाइन होने चाहिए। इनफैक्ट वो आपसे ज्यादा एक नंबर आगे हो, ताकि कुछ नए नए इनोवेशंस, कुछ क्रिएटिव माइंड वो आपकी में ऐड कर सके। थर्ड इज बिजनेस मॉडल। आपका जो बिजनेस मॉडल होना चाहिए वो स्केलेबल होना चाहिए, और उसमें जो रेवेन्यू है वो रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल होना चाहिए। आपका रेवेन्यू बार मतलब उसमें ये नहीं कि आपने एक बार पूरी सोसाइटी की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी उसके बाद क्या, तो उसके अंदर एक ऐसा एक इंटेंट होना चाहिए कि उसको हम स्केलेबल कर सकें। एंड उसकी हर एक महीने में इधर 6 महीने में उसकी नीड जनरेट हो कस्टमर की, यस वो आपके पास आए और इस प्रोडक्ट को या सर्विस को खरीदे। दैट्स वाई उसमें एक रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल जनरेट हो पाएगा, जिससे आपका स्टार्टअप स्केलेबल होगा और वो आगे बढ़ पाएगा। नेक्स्ट इज फंडिंग। फंडिंग के बारे में वी विल डिस्कस डिटेल अबाउट इट लेटर ऑन। ट्रेनिंग आपके एम्प्लॉयज को, आपके स्टाफ को एक प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी चाहिए, ताकि वो जो
आपका मार्केट प्लेस है या आपका स्टार्टअप है वो एक अच्छी तरीके से वर्क कर पाए। जैसे कि फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट आपका कस्टमर को भी ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है, जो कि उस पे माल बेचने आया है, वो उसके लिए कस्टमर है फ्लिपकार्ट के लिए, पर वैसे वो सेलर है वहाँ फ्लिपकार्ट के मार्केट प्लेस पे, तो वो उनको भी ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है कि आप कैसे माल बेचना है, कैसे आपको एडवर्टीजमेंट करना है उन प्रोडक्ट्स की, कैसे आपको उस पे जो आपको उनका प्लेटफॉर्म है उस पर आपको लिस्ट करना है प्रोडक्ट्स को, ईच एंड एवरीथिंग दे विल गाइड। तो उनकी जो ट्रेनिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए, और वो अपनी जो इंटरनल एम्प्लॉइज है अदर देन द सेलर्स विच आर देयर ऑन द फ्लिपकार्ट मार्केट प्लेस, उनको भी ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है। सो ट्रेनिंग इज एसेंशियल पार्ट फॉर एवरी स्टार्टअप। हर एक ह्यूमन बीइंग जो कि इन्वॉल्व है उस पार्ट में, बीट सेलर, बीट कस्टमर, बीट देयर इंटरनल एम्प्लॉइज, उन सबको एक प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। एंड द नेक्स्ट इज मार्केटिंग। मार्केटिंग इज लाइक इट रिलेट्स टू ब्रांडिंग। आपकी एक ब्रांडिंग क्रिएट होनी चाहिए। सपोजिंगली मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी स्टार्टअप। जैसे कि अगर हम डिस्कस करना चाहें, पेपर बोर्ड का नाम आप सबने सुना होगा। पेपर बोर्ड की जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। जैसे कि पेपर बोर्ड के जो कॉम्पिटिटर्स हैं ऑलरेडी मार्केट में, दैट इज माजा, फ्रूटी, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं मार्केट में। इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो केन में आते हैं या फिर टेट्रा पैक में आते हैं। बट व्हाट पेपर बोर्ड डिड, उसने जो अपनी पैकेजिंग है वो बिल्कुल ही डिफरेंट मैनर में इंट्रोड्यूस करी। उसका जो, अगर आपने देखा हो, उसका जो पैकेट आता है पेपर बोर्ड का, वो कागज के बॉटल टाइप शेप में आता है। तो उसकी जो पैकेजिंग बिल्कुल डिफरेंट है। तो उससे वो, अगर हम शेल्फ में से, अगर हम किसी मॉल में जाते हैं, वहां पे अगर बहुत सारे सॉफ्ट ड्रिंक्स रखे हुए हैं, तो उसमें से अट्रैक्टिव पैकेजिंग की वजह से पेपर बोर्ड अलग से आइडेंटिफाई होता है कि हाँ दिस इज समथिंग डिफरेंट, तो लोगों का ध्यान जाता है उस पर। तो दिस इज एन पॉजिटिव पॉइंट ऑन दी साइड ऑफ पेपर बोर्ड कि उसने उसका फायदा उठाया एक अट्रैक्टिव मार्केटिंग करके, अट्रैक्टिव पैकेजिंग करके। एंड सेकेंडली, जो पेपर बोर्ड के फ्लेवर्स हैं दैट इज टोटली डिफरेंट, आई कैन से। जैसे कि उसके जो फ्लेवर्स हैं वो बिल्कुल जो हमारे चाइल्डहुड मेमोरीज हैं उनसे रिलेट करते हैं। जैसे कि आम रस हो गया और काला खट्टा हो गया। तो इससे जो लोग हैं वो कनेक्ट कर पाते हैं अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज पे, और उसको एक पॉजिटिव एक इम्पैक्ट पड़ता है, एक एडवांटेज मिलता है रादर देन अदर ब्रांड्स जो कि अवेलेबल है मार्केट में सेम इंडस्ट्री में। तो मार्केटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विच रिलेट्स टू ब्रांडिंग ऑल्सो। आपको उसको अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि यही एक चीज है जो आपकी ब्रांड क्रिएट कर पाएगी। नेक्स्ट इज फंडिंग। तो हम फंडिंग को आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फंडिंग। अगर हमें स्टार्टअप करना है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि हमें क्या क्या चीजें चाहिए स्टार्टअप करने के लिए: आइडिया, टीम, बिजनेस मॉडल, फंडिंग, ट्रेनिंग एंड मार्केटिंग। सो नाउ वी विल डिस्कस फंडिंग इन डिटेल। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फंड रेजिंग। सो सबसे पहला सोर्स है अपना खुद का पैसा लगाना किसी भी स्टार्टअप में। दिस इज द बेस्ट सोर्स आई हैव कम अक्रॉस विद, बिकॉज आपको किसी के ऊपर भी लायबिलिटी नहीं होगी, किसी को आपको कुछ देना नहीं है बदले में। तो अपना पैसा लगाना इज द बेस्ट। जो आप अपना पैसा कमा रहे हो अपने प्रोडक्ट्स को बेच बेच के, री इन्वेस्ट योर प्रॉफिट्स अगेन इन योर बिजनेस टू अर्न मोर, दैट इज द बेस्टेस्ट मेथड। बट इससे एक बार की, मतलब अगर आपको ज्यादा फंड्स चाहिए तो आप इससे ग्रो नहीं कर पाओगे फंड्स के मामले में। बट एट इनिशियल फेजेस में आप इससे बेनिफिट होगा, बिकॉज आपकी लायबिलिटी नहीं होगी कोई भी टुवर्ड्स आउटसाइड मार्केट। आपकी पर्सनल सेविंग्स, आपके जो फ्रेंड्स एंड फैमिली है उन सबसे आप ले सकते हैं। दिस इज द बूटस्ट्रैप मेथड ऑफ फंडिंग। दैट मीन्स अपना पैसा लगाना, किसी को भी किसी बाहर से लायबिलिटी ना लेना। सेकेंड इज क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग इज फाइनेंस फ्रॉम पब्लिक। जैसे कि अभी कोरोना में बहुत चला था क्राउड फंडिंग, किसी को भी जरूरत थी पैसों की, किसी की हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए, तो वो लोग क्राउड फंडिंग कर रहे थे। देयर आर मेनी साइट्स, मेनी कंपनीज जो कि क्राउड फंडिंग कराती हैं। फॉर एग्जाम्पल कीटो, मिलाप, किकस्टार्टर, ये कुछ कंपनीज हैं जो कि आपको क्राउड फंडिंग कराने में हेल्प करती हैं। दे पुट ऑन लाइक कि आपको इन फंड्स की जरूरत है फॉर दिस इन दिस पर्पस। और जो पूरे मार्केट में जितने भी लोग हैं वो कुछ कुछ छोटा छोटा अमाउंट जो भी उनको कंफर्टेबल हो, बीट 5 रुपी, बीट 10 रुपी, बीट 1000 रुपी, वो डोनेट करते हैं। तो इससे सामने वाले का पर्पस भी सॉल्व हो जाता है। इसके बदले में ना कोई इक्विटी जाती, ना ही कोई डेट जाती है, टोटली फ्री ऑफ एनी लायबिलिटी है, because you get this like in the form of gift or donation. You don't have to give them equity or debt in return of this. Third is angel investors. एंजल इन्वेस्टर्स जो आपके फंड में पैसा, स्टार्टअप में पैसा लगाते हैं, वो इक्विटी या डेट की फॉर्म में लगाते हैं। एक शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगाते हैं। जैसे कि अगर आपको, और बहुत ही कम अमाउंट लगाते हैं, जैसे 50 लाख तक।
जब इन्होंने आपके पास स्टार्टअप में पैसे लगाया, आप ग्रो कर रहे हैं, एंड आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो अपनी इक्विटी के अगेंस्ट जो भी उनकी वैल्यूएशन बनती है वो उतना पैसा निकाल के ले जाते हैं, कंपनी से एग्जिट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टार्टअप ग्राइंड, लीड एंजल्स, इंडिविजुअल नेटवर्क कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके एंजल इन्वेस्टर्स के। किसी भी स्टार्टअप को फंडिंग चाहिए तो कुछ छोटे अमाउंट की फंडिंग चाहिए, 50 लाख रुपए तक की, तो वो एंजल इन्वेस्टर्स को अप्रोच कर सकते हैं, टैप कर सकते हैं, और वो लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं स्टार्टअप को बिल्ड करने में। नेक्स्ट इज वेंचर कैपिटल, वेंचर डेट। दे ऑल्सो टेक इक्विटी इन दी कंपनी। उनको भी बदले में इक्विटी चाहिए होती है कंपनी में, लेकिन अगर आपको ज्यादा पैसे चाहिए, सपोज 100 करोड़ तक का, तो आप वेंचर कैपिटल से कनेक्ट कर सकते हैं, और आपको कम पैसे चाहिए 20-50 लाख करीब तक का, तो आप एंजल इन्वेस्टर से कनेक्ट कर सकते हैं। एसएल ग्रुप, नेक्सस, सिकोआ कैपिटल, कलारी कैपिटल, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ वेंचर कैपिटलिस्ट। कुछ कंपनीज है मार्केट में जो कि वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, ये आपको फंड प्रोवाइड कराएंगी 100 करोड़ तक की में, और आपकी कंपनी में बदले में इक्विटी लेंगी। ये भी कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पे जब आप राइज करेंगे तो उसके बाद वो अपनी इक्विटी का वैल्यूएशन जो बनता है उस समय पे वो लेने के बाद कंपनी एग्जिट कर देती है, और छोड़ के मतलब कंपनी से एग्जिट ले लेती है, इक्विटी डाइल्यूट कर देती है अपनी। अगर आपको इससे ज्यादा फंड रेज करना है, प्राइवेट इक्विटी इज द मेथड। अगर आपको इससे ज्यादा फंड रेज करना है 100 करोड़ से ऊपर का, एंड 500 करोड़ से ऊपर का फंड रेज करना है, तो आईपीओ इज द मेथड। आईपीओ तो आप सबने सुना ही होगा, अगर मार्केट में शेयर्स लॉन्च करना, शेयर्स इशू करना पब्लिक में, दैट इज आईपीओ। अगर आपको 500 करोड़ से ऊपर का लॉन्च करना है तो आपको आईपीओ में जाना पड़ेगा। देन डिफरेंट कंसेप्ट अराइजेस, एक्सीलरेटर और इंक्यूबेटर का। इसमें क्या होता है, अगर आपके पास कोई आइडिया है तो ये लोग आपके, लेकिन फंड नहीं है आपको उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो आपको अपना आइडिया उनको समझाना पड़ेगा इंक्यूबेटर, एक्सीलरेटर को। दे विल प्रोवाइड यू देयर मार्केट स्पेस, दे प्रोवाइड यू देयर ऑफिस स्पेस, दे प्रोवाइड यू मेंटोरशिप, advices, funding, digital marketing support, and each and every advertising marketing support. They will also build an app for you. They will provide their offices for your setup. Each and everything they will provide you. But you must be having an idea, an innovative idea, so that they can be convinced that that this idea will bring profits in the near future. So they will provide you each and every aspect related whatever is relevant for you. So there is one company, Y Combinator, जो कि आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड कराती है। अगर आपके पास एक अच्छा आइडिया है तो आपको सारी सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, एक स्टार्टिंग से लेके एंड तक, उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए। फंडिंग भी प्रोवाइड करेगी, मार्केटिंग सर्विसेज, आपको अपना ऑफिस स्पेस देगी, कि मेंटोरशिप करेगी, आपको एडवाइसेस देगी, ईच एंड एवरीथिंग दे विल प्रोवाइड। जो रेजर पे, आपने एग्जाम्पल सुना होगा रेजर पे का, जो कि मार्केट में अभी बहुत इन है, वो भी वाई कॉम्बिनेटर के थ्रू ही बनी है, और उन्होंने ही उसको सारी जो फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड कराई थी इनिशियली। Second, another method of fundraising is bill discounting. You all must have heard about it. Bill discounting is like कि आप invoice discount करा लो बैंक से जाके। अगर आपके पास invoice है तो बैंक आपको उसके behalf पे fund raise कर देती है, and then you can use that for fulfillment of your order and all that stuff. Now, these are the sources of funding. जैसे आपको जहां से आपको पैसा मिल सकता है। अब पैसा तो मिल गया, लेकिन पैसा लेने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, उसके लिए भी आपको एक प्रोसीजर है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा, ताकि आपको ये आपका जो फंड रेज है वो इन सोर्सेज से रेज हो पाए। सबसे पहले आपको उसके लिए कंपनी बनानी पड़ेगी, बीट प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक कंपनी। अगर आपको आईपीओ के लिए जाना है तो आपको पब्लिक लिमिटेड बनानी पड़ेगी, और अगर आपको प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटलिस्ट, एंजल इन्वेस्टर्स, इन सब के लिए जाना है तो आपको एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी पड़ेगी। आफ्टरवर्ड्स यू शुड हैव ए मार्केट रिसर्च। आपका कस्टमर बेस कितना बड़ा है, आपका मार्केट रीच क्या है, आप कौन सी टारगेट ऑडियंस की प्रॉब्लम सॉर्ट कर रहे हो, कितना बड़ा मार्केट रीच है आपका, क्या मार्केट साइज, सो दैट इन्वेस्टर्स मस्ट बी कन्विंस्ड कि हाँ जो आपका प्रोडक्ट है जिसमें वो पैसा लगाने वाले हैं वो एक अच्छा प्रोडक्ट होगा आगे जाके, क्योंकि वो लोग भी आपका मार्केट बेस देखेंगे कि आप कितने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, आपका मार्केट बेस कितना अच्छा है, तो वो उसी हिसाब से अपना पैसा लगाते हैं। आप एक ये सजेशन है कि अगर आपका स्टार्टअप है तो आपका उसके अंदर पैसा लगा होना चाहिए, बिकॉज जब इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं, जब उनको बताते हो कि हमें इतना फंड चाहिए, तो वो देखते हैं कि आपका पैसा कितना लगा आपके स्टार्टअप में, सो दैट उनको पता चलता है कि आप कितनी सीरियस हो अपने स्टार्टअप को लेके। अगर आप अपना ही पैसा नहीं लगाओगे स्टार्टअप में और सिर्फ सामने वाले से मांगने आएंगे कि भाई हमें पैसा दे दो, हमें स्टार्टअप स्टार्ट करना है, तो वो उतना सीरियसनेस नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि आपका ही कुछ रिस्क इन्वॉल्व नहीं है उसके अंदर। तो हाउ कैन ही ट्रस्ट अपॉन यू कि आप इतना सीरियस हो इस प्रोजेक्ट को लेके। सो आपका स्टार्टअप में आपका पैसा लगना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि सामने वाले को एक ट्रस्ट इश्यूज ना आए कि हाँ हमारे ही पैसे लगा तो दैट मीन्स हमारी भी लायबिलिटी है।
सेकेंड इज आपको मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी प्रॉपरली कि आपका क्या कस्टमर बेस है, मार्केट साइज, नंबर ऑफ कस्टमर्स, क्या प्रॉफिटेबिलिटी आपकी बनेगी, कितने प्रोडक्ट्स पे जाके आपका ब्रेक इवन आएगा, आपका क्या जीपी रेशो, क्या एनपी रेशो, कैसे रेवेन्यू मॉडल आपका कैसे होगा, रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल होना चाहिए आपकी स्केलेबिलिटी के लिए, आप रेवेन्यू कैसे जनरेट करेंगे, सामने वाले को कन्विंस होना चाहिए। इन्वेस्टर सबसे पहले जब आपसे शार्क टैंक इंडिया में वैसे भी सबने देखा होगा ये वाली चीज, तो कि कैसे आपको इन्वेस्टर्स को पिच करना है। तो थर्ड इज बजट शीट, आपको एक बजट शीट प्रिपेयर करनी है कि आपको इन्वेस्टर से कितना पैसा मांगना है, वो जो पैसा है वो आप कहाँ कहाँ यूज करने वाले हैं और किस तरीके से आप उसको यूज करेंगे। जैसे कि अपने एम्प्लॉइज के लिए आप कितना यूज करने वाले हैं, उनके पेरोल के लिए आपको उनकी ट्रेनिंग के लिए कितना यूज करने वाले हैं, प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना यूज करने वाले हैं। ईच एंड एवरी एस्पेक्ट मस्ट बी क्लियर इन दैट बजट शीट। आप उस पैसे को कहाँ कहाँ डाइवर्सिफाई करने वाले हैं, मैन पावर, लीगल एक्सपेंसेस, ट्रेनिंग, मार्केटिंग में, सेल्स एडवर्टीजमेंट में कितना पैसा आप लगाएंगे उन जगहों पे। सबसे आपको एक राइट इन्वेस्टर फाइंड आउट करना है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल्स दिए थे, सिक्वा कैपिटल, आरएफजी वेंचर्स, एक्सेल पार्टनर्स, नेक्सस वेंचर्स पार्टनर्स, ये सारे इन्वेस्टर्स हैं, एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट। तो ये इन लोगों की जो एक्सपर्टीज है वो एक डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। सपोजिंग सिक्वा कैपिटल फिनटेक स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं। इफ यू आर हेडिंग अपॉन टू अ फिनटेक स्टार्टअप, तो आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बिकॉज दे मस्ट बी रियली इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग यू if they find that your idea is scalable and profitable in the near future. And same like this, if you're investing FMCG products, then RFG Ventures are ready to invest in that because they are already investing in these ventures only. Same case with Excel Partners, they are investing they invest in e-commerce. तो अगर आपका कोई बिजनेस मार्केट प्लेस रिलेटेड है, ई कॉमर्स रिलेटेड है, तो आप एसल पार्टनर्स को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दे मस्ट बी रियली इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग यू। सो आपका जो इन्वेस्टर है वो आपको सही तरीके से चूज करना है ताकि उसकी जो एक्सपर्टीज है उसका फायदा उठा सके अपने बिजनेस में। बिकॉज देयर आर एन नंबर ऑफ पीपल जो आपको पैसा दे सकते हैं, बट स्टिल अदर देन फंडिंग, उनकी जो एक्सपर्टीज है, उनके जो नेटवर्क्स हैं, कनेक्ट्स हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, उनका आपको हेल्प होनी चाहिए आपके जो स्टार्टअप है उसको स्केल अप करने में, उसको और प्रॉफिटेबल बनाने में। तो आपके जो इन्वेस्टर्स हैं ऐसी, तो वो एक सही तरीके के इन्वेस्टर्स होने चाहिए जो कि ऑलरेडी इस बिजनेस में इन्वॉल्व हो। सेम केस विद नेक्सस वेंचर्स, वो कंज्यूमर बिजनेस में इन्वॉल्व करते हैं। अगर आपका बिजनेस इनसे रिलेटेड है तो आपको उनसे कॉन्टैक्ट करना चाहिए, सो दैट यू मस्ट बी प्रॉफिटेबल इन दैट केस। नाउ पिच डेस्क, आपने बना लिया अपना पूरा, अपने पास डॉक्यूमेंटेशन रेडी कर लिया था, हाउ मच अमाउंट यू वांट, at what places you will invest your amount. Then you have to convince your investors that what I am doing, what is my business model, what is my revenue model, why I need that funding, and how I'm going to use that funding. So the pitch deck must be like कि आपको investors convince करना है कि वो आप में invest क्यों करें, वो आप में पैसा क्यों लगाएं। तो उनको कुछ ना कुछ benefit दिखेगा तभी वो आप में पैसा लगाएंगे। तो each and everything must be commensurate with that. बिजनेस मॉडल, बीट रेवेन्यू मॉडल, बीट फंडिंग, टीम स्ट्रक्चर। आपका टीम स्ट्रक्चर बहुत मैटर करता है जब आप इन्वेस्टर से फंडिंग मांगने जाते हैं, बिकॉज दे यूज टू सी कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से आए हैं, आप पहले क्या करते थे, आप क्या कर रहे हैं एंड क्यों कर रहे हैं, व्हाट इज नीड ऑफ दैट। सो देयर मस्ट बी प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स। आपकी जो टीम है उनमें जो टीम मेंबर्स हैं वो प्रॉपर बैकग्राउंड से होने चाहिए जो कि उसमें स्पेशलाइजेशन हो। सपोजिंग अगर आपका कोई टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है तो उसमें जो बंदा है वो इंजीनियर है, तो एक अच्छे कॉलेज से, मतलब उसकी जो इंजीनियरिंग चीज स्किल्स हैं वो प्रॉपर होनी चाहिए, सो दैट ही में एडप्ट टू दिस स्टार्टअप क्वालिटी। आपका जीपी रेशियो क्या है अब तक का, एनपी रेशियो क्या है, सेल्स फिगर क्या है, दे आल्सो सी योर फिगर्स। आपका पहले आपने कितना सेल कर रखा है, कितना बेच आपने जो गुड्स या प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं वो कितनी मार्केट में आपकी पोजीशन चल रही है। दे आल्सो सी योर ब्रांड, कि आप मार्केट में आप कितने लोग अभी तक आपको जानते हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है मार्केट में। तो आपको अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में प्रॉपरली नॉलेज होना चाहिए कि कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं, उनकी क्या फिगर्स चल रही हैं, वो कितना कमा रहे हैं, कब से कमा रहे हैं, कब से वो मार्केट में हैं, और क्या क्या एडवांटेजेस हैं आपके पास ओवर योर कॉम्पिटिटर्स, कैसे आप अपने कॉम्पिटिटर्स से आगे निकलेंगे आगे इन द नियर फ्यूचर, उसका एक प्रॉपर प्लान आपके पास होना चाहिए। सो यू मस्ट कन्विंस योर इन्वेस्टर्स रिगार्डिंग दैट। फाइनली, when investors get convinced from your pitch, they will be willing to invest funds in your startup. Then the term sheet will be prepared on the basis of that, how much equity they will take in your startup and all that stuff. Proper finalization of all the papers has been done in that. Marketing, as I've already told, is an important part of any brand, any startup. I've already taken example of Paperboard earlier, कि उनकी जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव थी और बहुत ज्यादा नई थी, सो लोग उससे अट्रैक्ट होते थे
अगर वो इतने 10 प्रोडक्ट के बीच में अगर आपने पेपर बोर्ड का प्रोडक्ट देख लिया तो आप उसकी तरफ जाओगे जरूर एक बार कि वो है क्या। तो इसलिए उसकी पैकेजिंग इज एन अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन क्रिएटिंग अ ब्रांड। लाइक दैट पेटीएम ने भी अपनी मार्केटिंग इतनी जबरदस्त करी है आज के दिन में, आज के मतलब मार्केट में, कि अगर किसी को पैसा भी ट्रांसफर करना होता है तो वो यही बोलता है कि पेटीएम कर दे मुझे अमाउंट। दे डोंट यूज टू से कि मुझे अमाउंट ट्रांसफर कर दे, मुझे पेटीएम कर दे। तो पेटीएम इज लाइक उसने अपनी ब्रांड इतनी क्रिएट कर ली है मार्केट में एडवर्टीजमेंट कर करके कि उसकी जो ब्रांड नेम है वही उसको बंदा यूज करता है पैसे ट्रांसफर करने के लिए। दीज आर द एग्जांपल्स कि मार्केटिंग इज एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। नाउ कैसे हम गवर्नमेंट ने जो स्टार्टअप्स हैं उनको एनकरेज करने के लिए बहुत सारे मेथड्स निकाले हैं। उसमें से एक स्टार्टअप इंडिया स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है इंडिया में स्टार्टअप्स को बूस्ट करने के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि आप अपने स्टार्टअप्स लॉन्च करिए, अपने बिजनेसेस लॉन्च करिए मार्केट में। बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड किए गए हैं स्टार्टअप इंडिया स्कीम के थ्रू एंटरप्रेन्योर्स को, स्टार्टअप होल्डर्स को। सबसे पहला बेनिफिट जो है उसके अंदर है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। दिस वी विल डिस्कस इन द नियर फ्यूचर। सेकंड बेनिफिट इज बेनिफिट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, अगर कोई आपका स्टार्टअप है इसमें 51% ऑफ इक्विटी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के पास है, को फाउंडर वुमेन एंटरप्रेन्योर है, तो उस केस में गवर्नमेंट जो है एक स्पेशल इंसेंटिव्स प्रोवाइड कराती है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को। डिफरेंट स्टेट वाइज आपके इंसेंटिव्स डिफर करते हैं, विच यू कैन चेक ऑन द वेबसाइट। आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू द लिंक ऑफ दैट वेबसाइट। आप वहां पे चेक कर सकते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स अवेलेबल है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को। दिस यू कैन ऑल्सो टेल योर क्लाइंट्स कि अगर कोई भी आपके पास, जैसे कि सपोजिंगली कोई आता है कि मुझे स्टार्टअप करना है, मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, देयर आर न्यूमरस बेनिफिट्स व्हिच आर अवेलेबल टू ईच एंड एवरी स्टार्टअप। आप जो भी स्टार्टअप करना चाहते हैं उसका नेचर समझिए कि वो किस रिलेटेड है, बी इट इलेक्ट्रिक व्हीकल, ग्रीन एनर्जी। देयर आर बेनिफिट्स इन नंबर ऑफ बेनिफिट्स व्हिच आर अवेलेबल टू ग्रीन एनर्जी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑन द गवर्नमेंट वेबसाइट। यू कैन चेक आउट इट। अगर आप क्लाइंट को सजेस्ट करना चाहते हैं कि हाँ ये बेनिफिट्स हैं, बिकॉज स्टेट वाइज बेनिफिट्स डिफर करते हैं। किसी को लैंड में इंसेंटिव मिलता है, किसी को इलेक्ट्रिसिटी में इंसेंटिव मिल रहा है, कोई स्टेट इलेक्ट्रिसिटी में इंसेंटिव प्रोवाइड करा रही है, कोई स्टेट लैंड में इंसेंटिव प्रोवाइड करा रही है, स्टैम्प ड्यूटी में इंसेंटिव प्रोवाइड करा रही है। देयर आर एन नंबर ऑफ बेनिफिट्स। तो अगर कोई भी आपके पास क्लाइंट भी आता है कि मुझे ये स्टार्टअप करना है, तो पहले आप उसका मेथड समझिए कि वो क्या करना चाह रहा है, किस टाइप का बिजनेस वो लॉन्च करना चाह रहा है, एंड आफ्टरवर्ड्स आप उसको उस वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं कि क्या क्या बेनिफिट उस स्टेट में उस स्टार्टअप के लिए अवेलेबल है। अगर उसकी को फाउंडर या मेन फाउंडर ही वुमेन है तो उस केस में अलग बेनिफिट्स और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स अवेलेबल हैं जो गवर्नमेंट ने दिए हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए। तो ये सब आप साइट पे चेक कर सकते हैं। आई विल शेयर विद यू ऑल द लिंक। सेकंड इज गवर्नमेंट मार्केट प्लेस। गवर्नमेंट ने एक अपना मार्केट प्लेस लॉन्च किया है जहाँ पे जो स्टार्टअप्स हैं जो कि डीपीआईटी रिकॉग्नाइज्ड हैं, वी विल डिस्कस फर्दर कि डीपीआईटी रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स कौन से होते हैं, वो उधर जाके अपना जो प्रोडक्ट है, इधर सर्विसेज और प्रोडक्ट्स, दे कैन सेल अपॉन इट। बहुत सारे नॉर्म्स जो हैं गवर्नमेंट ने सब रिलैक्सेशन नॉर्म्स रिलैक्स कर दिए हैं सारे स्टार्टअप्स के लिए। अगर वो डीपीआईटी रिकॉग्नाइज्ड हैं तो वो आगे गवर्नमेंट की मार्केट प्लेस पे अपना प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटीज। सो स्टार्टिंग विद द स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, ये गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कराई है, स्टार्ट करी है। एक किसी को अगर फंडिंग की प्रॉब्लम है तो अगर वो डीपीआईटी रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप है तो वो सीड फंड स्कीम में गवर्नमेंट से पैसा ले सकता है। इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वी विल डिस्कस फर्दर। बेसिक जो सीड फंड स्कीम का जो बेसिक है वो ये है कि वो गवर्नमेंट आपको एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करने के लिए, जिनके पास फंडिंग की दिक्कत है, उनको एक छोटे अमाउंट का फंड प्रोवाइड कराती है। ये इंक्यूबेटर्स के थ्रू फंड प्रोवाइड किया जाता है। इसमें एक कमेटी बनाई गई है, एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी, जो कि देखती है कि कौन कौन से इंक्यूबेटर्स के थ्रू आपका जो फंडिंग है वो रिलीज की जाएगी। प्रॉपर एग्जीक्यूशन, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द सीड फंड स्कीम ये एग्जीक्यूट करती है एक एडवाइजरी कमेटी जो गवर्नमेंट ने इस फंड के लिए स्पेसिफिकली बनाई है। आपका जो हर एक स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए ये बनाया गया है, लेकिन मेन फोकस जो है वो दिया गया है वेस्ट मैनेजमेंट। अगर आपको कोई वेस्ट मैनेजमेंट रिलेटेड स्टार्टअप है तो आपको मेन फोकस दिया जाएगा इस केस में। इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द स्टार्टअप्स। ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि आपको यही स्पेसिफिक अगर आप कैटेगरी में करोगे तो आपको सीड फंड मिलेगा। इट इज एप्लीकेबल टू एवरीथिंग, बट देयर आर प्रेफरेंसेस कि अगर आप इन कैटेगरीज में फॉल करते हो तो वो लोग आपके स्पेशल प्रेफरेंस देंगे और आपको स्टार्टअप को फंडिंग देने के लिए। सारे वो इंक्यूबेटर्स के थ्रू फंडिंग होगी, दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू। और वो आपकी प्रोग्रेस देखेंगे। जो ईएसी कमेटी बनाई है गवर्नमेंट ने इस स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम को रेगुलेट करने के लिए,
वो आपके देखेंगे कि पैसा रेगुलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा, प्रॉपर सारी मॉनिटरिंग फंक्शनिंग प्रॉपर हो रही है कि नहीं हो रही है। एलिजिबिलिटी के अगर आप स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका जो स्टार्टअप वो DPIT रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। सेकेंडली, आपको 2 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए इनकॉर्पोरेट करे हुए। आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट फिट, मतलब मार्केट में प्रॉपरली कमर्शलाइजेशन एक फिट होना चाहिए मार्केट के अकॉर्डिंग। मतलब आपका प्रोडक्ट है वो सब लोगों के लिए इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, मतलब इन्वायरमेंट को कोई नुकसान ना हो उससे, पोल्यूशन फ्री, मतलब ये सब चीजें। स्केलिंग उसके अंदर स्केलेबल होना चाहिए। ये नहीं आप एक बार में सबकी कुछ भी आपने ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाया जिसने एक बार में सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, उसके बाद क्या? उसमें स्केलेबिलिटी का मेजर होना चाहिए कि उसको आप स्केल कर सको विद इन अ टाइम फ्रेम। उसमें टेक्नोलॉजी जो है वो मेन प्रोडक्ट होना चाहिए, एक इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को यूज करके आपका स्टार्टअप होना चाहिए, सो दैट यू आर एलिजिबल फॉर द स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। 10 लाख, अगर आपको 10 लाख से ज्यादा कोई सपोर्ट मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से तो वो उसके अंदर आप फॉल नहीं करोगे। अगर आपको ग्रांट मिली है, कोई प्राइज मिला है, दैट इज ओके, यू कैन, यू आर एलिजिबल फॉर दिस स्कीम। हेलो, Yeah, आपकी yes, जो Pooja. आई एम ऑडिबल ना? Yeah. एक्चुअली कुछ भी आवाज नहीं आ रही थी इस वजह से। नेक्स्ट इज आपका जो ग्रांट है वो आपको जो सीड फंड मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ डेट एंड कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। वो आपसे इक्विटी नहीं लेंगे, इसके बदले में आपको डेट देंगे एंड दे विल चार्ज यू इंटरेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट। नाउ जैसे कि बेसिक कंडीशन जो है, आप अगर सीड फंड स्कीम में अप्लाई करना चाहते हैं, दैट इज योर स्टार्टअप मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड इन DPIIT। सो व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आप DPIIT में रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप माने जाएंगे। इसके लिए आपको अलग से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट पे जाके आपको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा स्टार्टअप को, तो आप DPIIT रजिस्टर स्टार्टअप बनेंगे एंड आफ्टरवर्ड्स यू कैन अप्लाई फॉर द सीड फंड स्कीम एंड ऑल अदर बेनिफिट्स व्हिच आर अवेलेबल एंड ऑन द वेबसाइट टू ऑल द स्टार्टअप्स। like women entrepreneurs के जो special benefit that is also available when you are recognized in DPIIT, and Startup India Seed Fund Scheme is also available when you are recognized under DPIIT. So what are the basic criteria जब DPIIT registration के? आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, ईदर LLP हो, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म हो, ऑल आर एप्लीकेबल आप DPIIT रजिस्ट्रेशन के लिए, बट आपकी प्रोप्राइटरशिप एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप प्रोप्राइटरशिप कंसर्न बना के काम करना चाह रहे हैं, दैट इज नॉट एलिजिबल एज स्टार्टअप। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से आपको 10 साल ही हुए हो तो ही आप DPIIT रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप बन सकते हैं। अगर आप और आपका टर्नओवर जो पिछले सालों में 100 करोड़ से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर आपका टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर गया किसी भी साल में, देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर DPIIT recognition. So consequently you are not eligible for the seed fund scheme and all other benefits which is provided by the government on the website for all the startups. And it must not be formed by splitting and reconstruction. कोई सेकेंड हैंड बिजनेस आपका नहीं होना चाहिए, मतलब जैसे कि आप बिजनेस बेच देते हैं, लोग अमलगमेशन कर लेते हैं, इधर मर्जर कर लेते हैं, या आपका बिजनेस को रिकंस्ट्रक्शन में चले जाते हैं, तो वो सब नहीं होना चाहिए। प्योरली न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस होना चाहिए, नई कंपनी बनी होनी चाहिए अगर आपको DPIIT रिकॉग्निशन स्टार्टअप चाहिए तो। और आपका जो बिजनेस है वो इनोवेशन पे, प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे काम करना चाहिए। आपका जो कोई भी आप प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करें, दैट इज मेनली रिलेटेड टू इनोवेशन, कुछ नया, उसमें टेक्नोलॉजी ड्रिवन होना चाहिए, टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा हो और कुछ इनोवेटिव हो, then only you are eligible for the DPIIT recognition startup. अब नेक्स्ट इज क्या क्या बेनिफिट्स अवेलेबल हैं DPIIT रिकॉग्निशन स्टार्टअप, DPIIT रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स के लिए। सबसे पहली बात है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, लाइक ट्रेडमार्क एंड पेटेंट्स। अगर आप पेटेंट कराने जाएंगे तो आपको उसके अंदर 80% तक का डिस्काउंट मिलेगा अगर DPIIT रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स हैं। सेम केस विद ट्रेडमार्क्स, दे ऑल्सो फैसिलिटेट यू, गवर्नमेंट ने अपनी कमिटीज बना रखी हैं टू फैसिलिटेट द होल प्रोसीजर ऑफ द पेटेंट रजिस्ट्रेशन। पूरे पेटेंट रजिस्ट्रेशन से आपको गो थ्रू करेंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, सो दैट यू मस्ट बी एट ईज कि कैसे कैसे काम होना है। एंड that is also free of cost, they won't charge you anything for that, only the legal fees, the statutory fees will be payable by you. All other facilitations which is provided with the government is free of cost, they won't charge you anything regarding that. And fast application process होती है पेटेंट की if you are DPIIT recognized startup comparison to those which are other they are in the market जो कि DPIIT recognized नहीं है। अगर उनसे कंपेयर किया जाए तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो जल्दी प्रोसेस होगी और आपकी जो फीस है वो 80% डिस्काउंट पे मिलेगी।
पब्लिक प्रोक्योरमेंट नॉर्म्स में रिलैक्सेशन है। अगर आप कोई टेंडर अप्लाई करते हैं गवर्नमेंट के साइट पे जो मेंशन होते हैं, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ प्रायर क्राइटेरिया होता है, बीट टर्नओवर, बीट एक्सपर्टीज। वो आपसे डिपॉजिट मांगता है, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट मांगता है। कोई मतलब मोस्टली टेंडर्स में ये होता है कि आपका प्रायर एक्सपीरियंस इतने सालों का होना चाहिए, आपका प्रायर टर्नओवर इतना एवरेज होना चाहिए, आपको इतने रुपए का मनी डिपॉजिट करना है उसके अंदर। तो अगर आप डीपीआईटी करने स्टार्टअप जाए तो इन सब चीजों से, इन सब फैक्टर्स से गवर्नमेंट ने आपको रिलैक्सेशन दे रखा है कि अगर आपका प्रायर टर्नओवर नहीं है, इफ यू आर न्यूली स्टार्टअप, अगर आपने आज ही लॉन्च किया हुआ स्टार्टअप और कल आप टेंडर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज यू आर रिकॉग्नाइज्ड इन डीपीआईटी। आपके जो बेसिक कंडीशंस है टेंडर की, प्रायर टर्नओवर, प्रायर एक्सपर्टीज वाली, वो आपको फुलफिल करने की जरूरत नहीं है उस केस में, अगर आप डीपीआईटी रिकॉग्नाइज्ड हैं तो। बाकी रेस्ट डिपेंड अपॉन द टेंडर जो भी आपका निकलेगा। बहुत सारे टेंडर्स मैंने खुद देखा है अपने उसमें कि सब में रिलैक्सेशन होता है। आपके पास प्रायर एक्सपीरियंस आपको नहीं नीड है, अगर आप डीपीआईटी रिकॉग्नाइज्ड हैं, आपने आज ही रजिस्ट्रेशन कराया, वो टेंडर निकला कल परसों में, तब अप्लाई कर सकते हैं इजीली। फास्ट एग्जिट फॉर स्टार्टअप, अगर आपको अपना स्टार्टअप बंद करना है, आपको वाइंडिंग अप के प्रोसीजर में जाना है, तो एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज, अगर आपका डीपीआईटी रिकॉग्नाइज्ड है तो 90 डेज के फास्ट ट्रैक प्रोसेस में आपका स्टार्टअप पूरा वो खत्म हो जाएगा। सारी डेट स्ट्रक्चर्स क्लियर करके, आपकी इक्विटी क्लियर करके, पूरा लायबिलिटीज पे ऑफ करके 90 डेज के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से जो लिक्विडेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा, एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज व्हिच यूजुअली टेक 180 डेज। सीड फंड स्कीम, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन डिटेल कि सीड फंड स्कीम के जो बेनिफिट्स हैं वो भी डीपीआईटी रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स को ही मिलेंगे, जिसमें आपको फंडिंग मिल जाएगी गवर्नमेंट से। इसमें वेंचर कैपिटलिस्ट एंजल इन्वेस्टर्स के फॉर्म में, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन डिटेल अर्लियर। नेक्स्ट इज 56(2)(7)(b) से एग्जेम्पशन मिलेगा इनकम टैक्स एक्ट में। दिस स्टेज दैट अगर आप कोई कंपनी है, नॉट अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, अगर वो शेयर इशू करती है प्रीमियम पे, then the difference between your face value and the share price, which is difference between, मतलब that is जो प्रीमियम अमाउंट, जो आपका फेस वैल्यू है वो, और जो आपका मार्केट में शेयर इशू हुआ है जिस अमाउंट पे, difference among that will be taxable under the head income from other sources. So अगर आप डीपीआईटी रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप हैं, then that amount, the difference is also not taxable under the head income from other sources. This is totally exempt. 56(2)(7)(b) की एग्जेम्पशन मिलती है डीपीआईटी रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स को। आपका जो बैलेंस अमाउंट है फेस वैल्यू से ज्यादा पे अगर आप शेयर इशू कर रहे हो मार्केट में, तो जो बैलेंस अमाउंट है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल नहीं होगा। नेक्स्ट इज डीपीआईटी रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स जो हैं, अगर वो इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड के थ्रू रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं आप, तो उनको और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड कराती है, जैसे कि टैक्स एग्जेम्पशन मिलती है एटीआईएसी में। पिछले 10 सालों में से कोई भी 3 साल आप अपने जो प्रॉफिट्स हैं वो एग्जेम्प्ट करा सकते हैं। दिस इज ओनली अवेलेबल अगर आप डीपीआईटी स्टार्टअप हैं, तब तो आपको जो अभी तक मैंने आपके बेनिफिट्स बताया वो मिलेंगे। पर अगर आपको टैक्स एग्जेम्पशन लेनी है तो आपको इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड के थ्रू भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, वहां पे भी रजिस्टर होना पड़ेगा, तब आपको टैक्स एग्जेम्पशन वाली बेनिफिट प्रोवाइड होगा, जिसमें आपको 10 में से कोई भी 3 सालों में आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो एग्जेम्प्ट हो सकते हैं। देयर इज अ लिमिट की जो स्टार्टअप आपके 2016 से ले के बाद हुए हैं और 2022 से पहले हुए हैं, दैट इज दिस इज द एंड लिमिट। अगर 1 अप्रैल 2022 से पहले जो भी अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता है वो कर ले, ताकि उसको ये सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। अगर उसके बाद वो स्टार्ट करेगा देन दीज बेनिफिट्स आर नॉट अवेलेबल टू देम। तो आप एटीआईएसी में बेनिफिट ले सकते हैं अगर आप इंटर मिनिस्ट्री बोर्ड में रजिस्ट्रेशन करा लेंगे अपने तो। सो आई हैव डिस्कस्ड कि क्या क्या फंडिंग्स, कैसे आपको फंडिंग मिलेगी स्टार्टअप्स में, कैसे क्या क्या बेनिफिट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड कराए हैं स्टार्टअप होल्डर्स को, जो जो स्टार्ट करना चाहते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को प्रोवाइड कराए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, उनको मोटिवेट करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, और जो नॉर्म कैसे आपको फंड रेज करना है, किस तरीके से आपको उस प्रोसीजर में गो थ्रू करना है, कैसे आपको फंड मिलेगा एंजल इन्वेस्टर्स, इंक्यूबेटर्स, एक्सेलरेटर्स के थ्रू। दिस इज स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द इंक्यूबेटर्स एंड एक्सेलरेटर्स व्हिच आई आल्सो टेल यू। जो एक्सेलरेटर्स होते हैं वो एग्जिस्टिंग बिजनेस में पैसा लगाते हैं टू एक्सेलरेट द थिंग्स। जो एग्जिस्टिंग बिजनेस चल रहा है उनका, उसको स्केलेबल करने के लिए, उसको और आगे बढ़ाने के लिए वो अपना इन्वेस्ट करते हैं अमाउंट। और जो इंक्यूबेटर्स होते हैं, दे प्रोवाइड यू ईच एंड एवरीथिंग टू स्टार्ट योर बिजनेस। यू मस्ट बी हैविंग एन आइडिया बिफोर दैट, and all other things, be it office space, be it advertising, be it marketing, be it mentorship, be it advices,
be it funding, they will provide you each and everything from A to Z. You must be having an idea, innovative idea, to convince them that yes, you are having an idea, you are able to do that business in a very innovative manner. Only then they will trust you, they will ready to invest in you. There's a slight difference between the incubator. That is a slight difference between the incubators and the accelerators. And all that stuff I've already told you: marketing, advertising, funding. And if you have any queries, you can ask. Pooja, there are few queries. Yes. For the queries, I request you to kindly mention the links you were talking about. If you can post the links into the chat box. So Sure, I'll post it. these links will go to the members. Sure, I'll post it later on. Actually, I'm Yeah. online from my phone, mobile. but I will post it later on, definitely. There's one question from CA Nagma Safi. She's asking that she's having a startup certificate. Now, how for ATIAC? For this, I have already told you in the presentation. अगर आपके पास GPIT recognition startup certificate है, उससे आपको tax exemption नहीं मिलेगी. For the tax exemption, you have to apply for the interministerial board. Same website पे interministerial board की application है, in which you need some few papers, few documents, extra documents, जो आपको complete करके फिर वो application submit करनी है online ही interministerial board को, and after that they will provide you a certificate related to that, and only then you can grant exemption, take exemption under the Income Tax Act. Can you just give a brief idea about the documents, additional documents which you are talking about? They want balance sheets, audit report for the 2 years, I believe. उसके अंदर जो है 2 साल की balance sheet मांगते हैं वो. जैसे कि अगर आपने startup start किया तो आप tax exemption obviously नहीं ले सकते initially because they ask for the balance sheets. तो आपको 1-2 साल रुकना पड़ेगा, पहले आपको अपना काम करना पड़ेगा, and after then you can apply for the interministerial board certificate. And basic documentation है company related, certificate of incorporation, MOA, and the promoters, जो आपके directors हैं उनके बारे में information, audit reports, balance sheet, all the basic documents are required in that. Nothing more serious as normal documentation है. I can share with you a link of that also later on कि आप कहाँ पे जाके application डाल सकते हैं online interministerial board को. One more thing, as we were talking about the startup and we discussed about the funding also, there is one question which comes in my mind because whenever we go for either for the angel investor or we go for venture capitalist, they always talk about the valuation, right? Definitely. So in a startup, if I talk about then initially whatever I am investing, let's say if I am investing X amount, right? But at the time of assessment being done by the angel investor or the venture capitalist, they always talk about the valuation part. So can you just give a brief idea about, like, because that is again an important part while we are talking about funding, that we have to keep the financials in such a way so that we would be able to have a good valuation of the business. So can you just give a brief idea about the valuation part? Definitely. Whenever you go to an investor for funding and sector purpose, they'll also see your figures, that how much sales you have made till date, what is your gross margin, what is your net margin. On the basis of that, they will have your valuation. So आपके जो net figures हैं, be it sales, be it gross margin, be it net margin, वो इस तरीके से मतलब properly framed होने चाहिए आपके financials के through, आपके balance sheets के through, so that उनकी जो valuation है वो आपके valuation match करे. Because you also, whenever you go to investors for the funding, you make your own valuation. You make your valuation on the basis of your net results only, your gross margins, your profits, your sales only. So it must reflect in a manner कि जो substantiate करे आपकी valuation को. Otherwise, they will be in डिस्कशन, वो आपकी फंडिंग से डिसएग्री कर सकते हैं कि आपने इतनी फंडिंग क्यों मांग ली. जैसे कि आप शार्क टैंक इंडिया में भी देख रहे होंगे, जो लोग वहां पे आते हैं अपनी फंडिंग मांगने के लिए, दे यूज टू कमेंसरेट विद दैट सेल्स. वो उनकी सेल्स से मैच ही नहीं करती हैं, उनकी सेल्स इतनी होती नहीं है अभी तक जब वो फंडिंग मांगने आते हैं, और वो वैल्यूएशन अपनी बहुत ज्यादा लगा लेते हैं इक्विटी देने के लिए. तो जो वहां पे शार्क टैंक इंडिया में जो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं वो भी इसी बात से डिसएग्री करते हैं कि आप इतना मांग क्यों रहे हैं जब आपकी सेल्स ही नहीं है. बिकॉज जो भी आप मांग रहे हो वो उसका सब्सटेंशिएट होना चाहिए. अब वो आप कैसे सब्सटेंशिएट करोगे? अपने फिगर्स के थ्रू ही सब्सटेंशिएट कर सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू ही सब्सटेंशिएट कर सकते हैं उस चीज को. या तो आपके पास ऐसा एक मेथड होना चाहिए. सपोजली आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, प्री रेवेन्यू स्टेज में है, उसने अभी तक बेचना आपने उसको चालू नहीं किया है, सिर्फ आपने एक प्रोटोटाइप बना के रखा है कि यस मैं इसको आगे बेचूंगा.
तो आपके पास उतना एस्टिमेशन होना चाहिए, आपके पास आगे के कॉन्ट्रैक्ट्स होने चाहिए जिनको आप बेचने वाले हो, उनके संग एक आपका, जैसे कि अगर कोई आपने प्रोडक्ट बनाया जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या फिर स्टेट गवर्नमेंट को बेच सकते हो आप, तो उनके कॉन्टैक्ट होने चाहिए, आपके पास कॉन्ट्रैक्ट नोट होने चाहिए कि हाँ मेरा कॉन्ट्रैक्ट इन लोगों से हो चुका है, इतनी रेवेन्यू में आगे आने वाले समय में कर लूंगा, तो उसके बेसिस में इतनी वैल्यूएशन आपसे मांग रहा हूँ। तो आपके जो भी वैल्यूएशन लगाए वो प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू सब्सटेंशिएट होनी चाहिए, या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या आपके पास इतने कॉन्टैक्ट्स हो, कैसे आप रेवेन्यू आगे जनरेट करने वाले हो, प्रॉपर्ली फ्रेम्ड होना चाहिए, तभी वो आपकी वैल्यूएशन को अग्री करेंगे। अदरवाइज वो अपने अकॉर्डिंग जो आपने डॉक्यूमेंट उनको सबमिट करे हैं उसके अकॉर्डिंग वैल्यूएशन निकालेंगे और दे विल ऑफर यू इक्विटी ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओनली। So from your presentation and from your discussion, what I can make it out like to all my professional colleagues who are present here, we ourselves can also go for a startup and we can guide our clients also, but for that proper planning is important. And while we Definitely. Talk then definitely EPS, then definitely EBITDA, these things are again important. Future projections are equally important, and how much fund we have invested and how much revenue we are going to generate out of the investment which we have made in the past and which we are planning to invest in future. That would be depending upon that. And as a chartered accountant, it becomes a role of each one of us, so that we would do. First of all, we need to understand the policies. First of all, we need to understand what all registrations are required. And once we know everything, then only we would be able to guide our client who is willing to move into the startups. Under Section 80 IAC is concerned, if you apply online and all documents are in order, then definitely you will get the approval under Section 80 IAC. I believe there is no separate link to get the approval easily, because it is again available on the portal only. Once you apply over the portal, then you would be able to get the approval. The only thing is the documents must be in order. There should not be any deficiency in the documents, and the information and clarification if they are asking for, you would be able to give all the clarifications within the prescribed time. And if you are not able to give the clarification, then definitely that approval may be rejected. Am I correct, Pooja? Yes, definitely so. Now, as we are talking about the startups, and as of now, we were talking about the startups for clients. Now, friends, I would like to intimate to all of you that Institute of Chartered Accountants of India, MSME Committee for MSME and Startups has also taken an initiative for the young chartered accountants who would like to go for the startup with their colleagues, with their friends. Institute is giving a facility, startup incubation facility at various locations across the India. And for that, I have already shared a link in the chat box. But the only condition is at least one member into that particular startup must be a qualified chartered accountant and must be a member of the Institute of Chartered Accountants of India. And if you are coming up with any startup, such kind of facility, then at least as far as incubation facility is concerned, Institute is going to provide you, and where you can generate your own startup. And I'm sure in the time to come, you would be able to get the benefit of that startup. Pooja, you have explained very nicely, and the members are asking for your presentation also. So my suggestion is, because this session will continue maybe for another 1 hour's time, so definitely you have some technical issues. Your voice was not. Yes. You were supposed to log in from this mobile. So I request you, once you log out from the mobile, I request you to kindly mention the links also in the chat box. All the attendees must get the benefit of it. And I request you to kindly share your presentation also. Sure. I'll do it right away. I believe there is no other question. All these questions were there. Friends, what I understand, I welcome CA Advocate CS Reema Jainji, who has joined for the next session. But before concluding this session, I would like to say one thing. The way Pooja has explained about the startups, it is really wonderful. She is one of the young chartered accountant who is especially practicing in startups in a very small city, Agra. Definitely, I understand Agra is a place where a lot of industry, a lot of footwear industries are there. And Agra is popular for Taj Mahal also. Agra is popular for Pitha also. But again, now Agra will be popular in startups also, because
the member like Pooja has taken a oath that she will definitely do wonders in startups. So I'm sure we all are going to get benefit of the deliberation Pooja has given. Without taking much of the time, I would like to hand over the charge to the session moderator, Soumya Srivastav ji, for another technical session. Over to Soumya Srivastav ji. Thank you, sir. Rightly said by Atul, sir. Really, Pooja, you were really enlightening on the topic. And to top it all, it was very, very easily and well explained. बहुत ही आपने language का इस्तेमाल किया जो it was very well connecting to most of the people over here. So the Thank next you. topic, so the next topic for our technical session is professional opportunities under the Companies Act 2013. Soumya, excuse me. Pooja ma'am, may you please stop sharing up your script? Sure, sure. Yeah. Soumya, continue. Thank you. Yes, sir. So, to proceed with the next topic for the technical session is professional opportunities under the Companies Act 2013. And to present it, we have a very eminent personality, Ms. Reema Jain from Delhi. She is a renowned of corporate law to be an independent director. To have an insightful session on this topic where we can have plethora of opportunities in the set field, I would like Ms. Reema Jain to have an in-depth discussion on the same. Over to you, ma'am. Reema, ma'am. Reema ji, Right. Thank you so much. Thank you so yeah. much, everybody, for being here. Thank you to CIRC for calling me here on this particular topic for professional opportunities under Companies Act 2013. I would, of course, talk about the esteemed presence of C. Atul Agrawal ji, C. Shashikant Chandrakar ji, and the moderator, C. Soumya Srivastav, and our earlier speakers here, Pooja Gurvani. So it had to be the other way around, first my session and then the other. But somehow technical glitches is something that we have been seeing, which happened too much. Voice issue. So is there a voice issue with my voice? There is some echo. Because I felt a bit of a glitch when Soumya was speaking. I believe let's all mute each other. Hello. Only speaker should come forward. Yeah. All right. What I also suggest in the situations when we have technical glitches, sir, it's when we turn off our cameras, the bandwidth increases for everybody and it becomes more smooth. But this way, at least everybody else may not feel the disrupt in the session. Now, as I talk about this particular topic, let me tell you, I believe this is one topic which does not require a presentation per se, because I'm already talking to chartered accountants who are working in this area. It's just that where they have professional opportunities under this particular statute, and not just this particular statute, but other corporate and allied laws as well. Like when I say that, it's well known that treats the diseases, but few people know that a CL looks after the health of the society. Now, this is something that when our current Prime Minister, Shri Narendra Modi, was Prime Ministerial candidate, then at a convention in 2013, where I luckily was a part, and this was again by the Chartered Accountants Institute in Ahmedabad, he said this particular line, which definitely financial health of the society. And when I say this, I also mention I'm proudly the wife of a chartered accountant as well. Now, while emphasizing the importance of the profession of a chartered accountant, there is a rightful stress that is required on the dynamism and the outlook of chartered accountants, where it is not just on the core areas, which is on, say, accounting, which is on, say, taxation, which is on, say, auditing, of course, then corporate laws,
today chartered accountants are too many number in terms of valuation professionals and IPs and doing brilliantly well. But how many of us really come out of that in the act? And probably this is also what the aim of the organizers was when they were looking on this particular topic for today's session, that we need to get out of the shell of whatever we're doing currently in our jobs or in our practice, and we really need to carve and get into and evolve into the dynamism so that we can evolve better and keep up with today's changes. Now, a number of professional avenues have opened up or are opening for the chartered accountants, along with manifold challenges. Let me come to Companies Act a bit later, but let's talk about IBC first. When a chartered accountant, of course, when he has been seeing through the financial statements of the company while in the process of accounting, while in the process of auditing, while in the process of taxation, he knows what kind of transactions, what kind of business that particular he is the valuer. This gives him an edge when he is an IP in that related business type. That is your expertise, which a better purpose of delivering what you're supposed to do. And of course, you also become the officer of the court. And the court here is the tribunal, the adjudicating authority under the Insolvency and Bankruptcy Code. तो वहां पर जब ये सिचुएशन आती है, anybody who has difficulty with the English, मेरे को बता देना, because I certainly prefer कि ऐसे topics पे जब अपन आते हैं तो a combination of Hindi and English is much better. So ऐसे जब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपने इन एक्सपर्टीज को लेकर, इस एक्सपर्टीज को लेकर ओवर देयर कोर एरियाज जब एक आईपी का प्रोफेशन में आते हैं और वहां पर जब डिलीवर करते हैं, then they do remarkably well. Rimaji, there is some voice issue at your end, I believe. I request you to kindly log in from mobile itself. Friends, let's wait for a minute. I believe she's relogging. There may be some issue. अच्छा, मोबाइल से ज्वाइन कर लो. Ma'am, you're audible now. Okay. So I think there was a problem over the internet glitch again. It continued. Now, if I come back to what I was speaking, guys, the accounting profession today has witnessed tremendous multifarious growth and success. The 21st century has seen a lot in terms of this profession rising and shining. The expanded role of accountants, if I say, it can be traced to a number of specific factors, like a number of large organizations have emerged. Then there is an evident separation of ownership and control. Then a lot of laws which have come up, wherein a lot of responsibilities have been cast over a chartered accountant, and a lot of dependability has also been cast upon. Say Companies Act हो, Income Tax Act हो, security laws से related legislation हो, complexity of business transactions हो, business structuring हो. अभी जैसे आप startups के बारे में ही बात कर रहे थे, तो startups के अंदर जब कुछ दिन पहले हम सबने देखा था शार्क टैंक इंडिया, काफी लोगों ने देखा होगा जरूर. पीयूष बंसल ने एक बात कही थी, सीए के पास मत जाना. हालांकि the first advisor to him was also his father and his sister. His sister is a rank holder chartered accountant, and his father is also a chartered accountant, though not in practice. And trust me, I know it from personal sources directly. Now, when I say that, एक lens cut को lens cut बनाने के लिए भी पीछे एक chartered accountant था. There's an apology which he has gone into subsequently, so let's not literally get into the discussion of that sort. But idea को ideation stage से लेकर
प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट से लाकर उसको आगे एक अच्छे सक्सेसफुल स्टार्टअप बनाने के पीछे स्ट्रक्चरिंग, इक्विटी कितना देना है कितना नहीं देना, डेट कितना आपके लिए बेटर है, डेट सर्विस हो पा रहा है नहीं हो रहा है, रेशियोज बनानी है नहीं बनानी है, ये सारा के सारा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कर रहा है। इसके अंदर हम कंपनीज एक्ट कहाँ लाते हैं, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस है सर, मैनेजरियल रेम्युनरेशन है सर, उसके अलावा आपकी बोर्ड मीटिंग्स के अंदर भी काफी बार दे प्रेफर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अगर मैं रोल कहूँ, वहां पर चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऑडिट कमिटी के अंदर प्रेजेंस of a chartered accountant who is the statutory auditor of the company. Internal auditor, 99% I've seen chartered accountant firms being taking up this particular assignment. Then GST से related हो गया, आपका VAT law से related हो गया, all of these. Then if you also talk about AGM के अंदर, either my stat auditor has to be present or my stat auditor has to communicate his leave of absence in writing beforehand. किसी और प्रोफेशन के लिए ये बात नहीं कही जी कि एजीएम में या तो आओ और नहीं आ रहे तो पहले से लीव ऑफ एब्सेंस ले लो, बिकॉज आपकी प्रेजेंस एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज मैंडेटरी एंड देयरफॉर द लॉ आल्सो टॉक्स अबाउट इट. सो देयर हैज बीन अ पैराडाइम शिफ्ट इन द अकाउंटेंसी प्रोफेशन, एन एक्सॉल्टेड पोजीशन इन द प्रोफेशनल ऑर्डर ऑफ द कंट्री अगर मैं बात करूं तो. सो दोज वेज अगर हम बात करें तो चाहे सेक्शन 138 हो, सेक्शन 139 हो, चाहे सेक्शन 149 हो, चाहे सेक्शन आपका 135 भी हो, जहां पे सीएसआर की आपकी पूरी कंप्यूटेशन होनी है कि भाई कौन सा आपका सीएसआर के कंप्यूटेशन के अंदर आपका सेक्शन के अंदर आप फॉल करोगे नहीं करोगे, आपने उसको कंसिडर करना है नहीं करना है, what will fall under schedule 7, what will not fall under schedule 7, क्या ATG में ले जाना है, क्या schedule 7 के अंदर ले जाना है. So वो सारी communication के टाइम whom does a businessman fall back to? And that particular person is no one other than a chartered accountant. अगर मैं ट्रेडिशनल बीन काउंटर्स की बात करूं तो तब से लेकर अब तक एक चार्टर्ड अकाउंटेंट मेटामॉर्फोस हो चुका है मल्टी डायमेंशनल प्रोफेशनल के अंदर, offering complete business solutions as information and decision specialist. Trust me when I say this, I have a live example with my husband as well. When clients come to us, they want all sorts of discussions to get clarified, or all sorts of decisions or information specialization at one stop shop. यहाँ पर the role of chartered accountant today has shifted from back room to boardroom, जहां मैंने बात करी right from independent director, right from females to be nominated as women directors as well, if you're a chartered accountant, plus because that's somewhere or the other they want an expertise, they want a chartered accountant to talk to a chartered accountant in the audit committee meeting, and trust me, you guys suit that really well. So we're not just a statistician anymore, but now we've become strategists. So उस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें हर एक सेक्शन को इवैल्यूएट करना है. अब एक बात बताती हूँ. One of the companies where I'm an independent director, we are all independent directors in that company, no promoter representation on the board. And trust me, my audit committee chairman, who's a chartered accountant and a seasoned chartered accountant, sir, does not stay back from being an auditor, trust me, when it comes to dealing with our auditors as well. Right from support to advisory to discussions to sometimes taking them left, right, and center over reporting. Because he knows which AS is applicable, which Ind AS is applicable, how would the reporting be done, how would the financial statement be impacted, how it should be structured into an adverse remark, or maybe a favorable remark or a disclaimer in my audit report. तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट को अगर सब चीजें पता है तो हम सिर्फ एक ऑडिट या सिर्फ एक टैक्सेशन के रोल से ऊपर क्यों नहीं आ सकते. इस पॉइंट पे मैं एक बात और कहूंगी जो मेरी शायद अतुल सर आपसे कुछ टाइम पहले बात हुई थी, when we had met at Noida only probably for some other Noida नहीं गाजियाबाद था शायद, and कोई और सेमिनार था जहां मेरी और सर की मुलाकात है. He was like, there are sometimes people feel that you really need to have an office to operate out of. Now let me show, and
before I show, पिछले 2 साल हमें एक चीज सिखा चुका है, you need to be present and you need to have that presence of mind and knowledge to survive. People are working from home. Some people, I saw someone's tweet, not tweet, it was an Insta post, someone was working from hospital. Actually, his wife was admitted and he was working from hospital at the time when the wife was resting. So it's not that you can sit at home and do nothing if you have a degree. You can sit and operate from your house as well. And today when I say that, please have a look. I am myself at my residence right now. Why? Because one, I am out of a surgery recently, and I was advised not to go out in cold, and it's terrible weather out. It's my knowledge that I'm sharing with you. It's my viewpoint that I'm sharing with you. And to do that, I really do not need to get to my office to do that, right? If I have to make, I'm an advocate, practicing advocate, right? मेरे को legal notice बनाना है, मुझे ऑफिस बैठने की जरूरत नहीं है, मैं client meetings virtually कर सकती हूँ. Zoom का platform बहुत अच्छी तरीके से बहुत seminars के लिए use हो गया है. ICAI ने भी करा, ICSI ने भी करा, Bar Council ने भी करा, ICMAI ने भी करा, Google Meet भी use करा. So it's now that location where you need to have your office, that particular point is already gone away. You can dispense away with that if you have the requisite knowledge. Now, what you can do is, you just need your office address to be placed and you can operate out of your home. We professionals have that benefit with the government as well. Register your home address as your official address, have your digital signature in hand in case if you're willing to certify, and उसके बाद घर से operate करो. Client meetings करनी है. Lot of co-working spaces are there. You can designate a particular room in your house as your office and probably call up for client meetings there. Or if you're a small startup, because obviously a small organization would sometime later become big. So initially, if you want, you could start off with something like that. Maybe cafe coffee day is another hotspot. Meeting the client and understanding the client is important. Maintaining the office comes secondary. So here, when I talk about this, आप घर बैठ के भी काम कर सकते हो. कोरोना के टाइम लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के टाइम कितनी फर्म्स वर्चुअली ऑपरेट हुई हैं, कितने ऑफिसेस 50% की गाइडलाइंस आती थी कि 50% you have to work from home, 50% have to be at the office, can be at the office. Have to नहीं, can. I'll correct myself. So here again, long lost is that particular time जहां पर वो बात करी जाती थी कि जी आपको ऑफिस में बैठ के ही काम कर सकते हो, आप घर बैठ के नहीं कर सकते. अतुल सर, यही बात हुई थी हमारी कुछ टाइम पहले. Yes, absolutely. आपको डिजिटल सिग्नेचर से अगर कोई फॉर्म सर्टिफाई करना है, यू डू नॉट, आप एक चीज बताओ, आपके पास 10 क्लाइंट है, आप 10 क्लाइंट के ऑफिस में जाकर हर बार फॉर्म चेक करके थोड़ी सर्टिफाई करोगे. आप ईमेल पे मंगवाओगे, उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ईमेल पे मंगवाओगे, उस फॉर्म को देखोगे और फिर अपना डिजिटल सिग्नेचर टेस्ट करोगे. एंड उसकी आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्यों मंगवाओगे? बिकॉज सेक्शन 447, 448 एंड में हर फॉर्म के MCA के लगा हुआ होता है और कहता है कि भाई कुछ भी गलत किया तो पीछे पड़ जाऊंगा. और तब उस पीछे पड़ जाऊंगा से बचने के लिए आप पहले सपोर्टिंग्स मंगवा के फॉर्म को पूरी तरह इवैल्यूएट करोगे, चेक करोगे, प्रोसीजर फॉलो हुआ है नहीं हुआ है वो चेक करोगे. बिकॉज यू कैन नॉट सिट एट every client's office at every possible time. Same as for your income tax returns. When you have the season for the income tax filing, you will not sit at your client's place and say, अब मैं तुम्हारी return file करता हूँ. You will call for information, call for data, call for the accounts books. That could be virtually as well. A lot of data could be exchanged over a lot of platforms. बहुत available है. Google Docs है, Google Dropbox भी है. Dropbox पे काफी clients के साथ data sync हो सकता है at the same time when they are updating their own data, and then you download the latest data and accordingly आप उस data से check करके verify करके records को income tax का data उसका prepare करो. Maybe have a virtual meet अगर चाहिए, otherwise physically meet them once, freeze it, file it. So it's my message is more for the women out here. If you've taken a break, you need to start again, you have a few clients, don't hesitate. Don't sit back there and say you cannot start. You can start from right there. All right. चलो सर्टिफिकेशन भी छोड़ो, बोलोगे मेरे पास क्लाइंट्स नहीं है सर्टिफिकेशन वाले. चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स के साथ लाइन अप हो जाओ, CS फर्म्स के साथ अटैच हो,
एडवोकेट फर्म्स के साथ अटैच हो, उनके पास से आपके पास ड्राफ्टिंग का काम आ सकता है। अगर फाइनेंशियल्स आप समझ सकते हो, नंबर्स आप समझ सकते हो, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलतियां क्या हैं, आई टेल यू आउट ऑफ एक्सपीरियंस, अ लॉट ऑफ आवर मैटर्स, मेरे को ना बैलेंस शीट्स आती हैं, और वो बैलेंस शीट्स जब इवैल्यूएट करनी होती है ना, तो मेरे को अपने हस्बैंड की फर्म की जरूरत पड़ती है। क्यों? लॉ में समझ लूंगी, पर नंबर समझने के लिए मेरे को चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए। इस वक्त अगर मैं घर पे हूँ एंड इफ माय हस्बैंड इज नॉट हियर, आई कैन स्टिल ईमेल हिम द डॉक्यूमेंट्स एंड से अपने टीम से एक बार बैलेंस शीट्स में लूपहोल्स निकलवाओ, वो पॉइंट्स निकलवाओ विच इज अगेंस्ट द लॉ। से अगर रिलेटेड पार्टी की ट्रांजैक्शन है और रिपोर्टेड नहीं है, से अगर कोई रिपोर्टिंग किसी और ग्रुप में होनी चाहिए थी, या रीग्रुपिंग करिए, रीग्रुपिंग का नोट नहीं दे रखा है, या फिर अगर कोई स्पेसिफिक कैलकुलेशन है विच इज रॉन्ग, अगर कोई 5% से ज्यादा का शेयर होल्डिंग है वो रिपोर्टेड नहीं है, तो उस तरीके के पॉइंटर्स हैं, those kind of assignments also come to chartered accountants. Why not? Then certain set of valuations जहां पर एक registered valuer, obviously today registered valuer is everywhere, a merchant banker who has to be a registered valuer in certain cases in FEMA matters or RBI matters is separate, but there are certain other valuations in business also. सेक्शन 135 की कैलकुलेशन के लिए मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए, या एटीजी में जाना है, सेक्शन 135 में जाना है, उसके लिए भी मेरे को चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए, और उसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे बगल में मेरे ऑफिस में बैठा हो, उतनी रिक्वायरमेंट मेरे को नहीं है। यू नीड टू आइडेंटिफाई दोज एरियाज जहां पे आप काम कर सको। अच्छा, आप आज की डेट में कंपनीज आर वर्किंग वर्चुअली, राइट? When companies are working virtually, board meetings are also happening virtually, the AGMs or EGMs are happening virtually. Then what happens? If there is a vacancy for a board position, if you think the company is good, after due verification about the company, its records, its documentation, talking to the other board members there, talking to the company officials to whatever extent possible, go join them, take an experience, and in the experience you'll also learn, they'll also gain. Trust me on this. आपने कभी कुछ सीख रखा हो वो कभी वेस्ट नहीं जाएगा। मैं जब कह रही हूँ मैं सीए नहीं हूँ, मैं सेमी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, and that gives me an edge at many places. I can understand the financial numbers to an extent, or maybe a large extent, but a proper certification by a chartered accountant is what matters, and that is what you guys have. You should trust your degree, and whatever knowledge you've gained in the process is just about updating yourself and putting it into process. तो ये चाहे मेल मेंबर्स हो, चाहे फीमेल मेंबर्स हो, चाहे कोरोना हो, चाहे नो कोरोना हो, चाहे कोरोना के चक्कर में ऑफिस बंद करा हुआ हो और उसके बाद दोबारा वहां पर स्टार्ट नहीं करा हुआ हो, it's about how you can service your client from any particular place today. अगर मैं यहाँ बैठ के सेमिनार कर सकती हूँ, सर नोएडा में भी सेमिनार हुए हैं, गाजियाबाद में भी हुए हैं, अब वर्चुअली भी हो रहे हैं. There has been a radical change, and a radical change is what needs to be coming in the mindset of all of us. चलो इसके बारे में एक और बात करते हैं. कितने ऑडिट्स लास्ट ईयर फिजिकली हुए हैं या लास्ट ईयर फिजिकली हुए हैं और कितने वर्चुअली हुए हैं? Documents were sent virtually. We have met the clients virtually. पर से मैं जब वी की बात कर रही हूँ, I include you guys here. And the first lockdown, I was a company secretary, so let me say that way. We've also done audits virtually. We've asked for documentation virtually because everybody knew what is the situation. The government also had similar guidelines and rules and notification circulars coming up. Ki bhai, we are giving you extensions. Why? Because they knew that physically nothing is happening. तो वहां एज एन इंटरनल ऑडिटर भी आप वर्चुअली अभी काम कर सकते हो. आप सपोर्ट टीम बन सकते हो, आप बैक ऑफिस टीम भी बन सकते हो, आप फ्रंट रो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बन सकते हो, डिपेंडिंग ऑन व्हाट एरिया यू गेट इनटू. मैं अगर थोड़ी देर पहले जो पिछली स्पीकर मिस गुंडानी ने स्टार्टअप इंडिया की बात करी. स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आप अपने क्लाइंट के डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन ही फाइल करने. यू डोंट नीड टू विजिट योर क्लाइंट, यू कैन टेक डिटेल्स वर्चुअली. You do not need to visit the Startup India or Invest India office at near Ashoka Hotel in Delhi. आप CIRC के हो, आप ये नहीं कहोगे कि NIRC के किसी मेंबर को काम दो. आप ये चीज खुद भी अपने क्लाइंट के साथ बैठ के डिस्कस करके, वर्चुअली डिस्कस करके, डॉक्यूमेंट्स फ्रीज करके, ईमेल्स पर एक्सचेंज करके, फाइनल प्रिपेयर करके, इन्वेस्ट इंडिया
स्टार्टअप इंडिया की साइट पर जाके उसका लॉगिन क्रिएट करके अपलोड करके अपने क्लाइंट का असाइनमेंट कर सकते हो और कमा सकते हो। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। जनरली लोग क्या कहते हैं, जी दिल्ली का काम है, दिल्ली वाला ढूंढो। ढूंढो, बट बहुत ज्यादा जरूरत हो तब ढूंढो, उससे पहले खुद कर सकते हो। अब फॉर एग्जाम्पल सौम्य, मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, आप मेरे को बिल्कुल सामने दिख रहे हो। अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप वर्किंग नहीं होते and you would have been in a sabbatical and you had to really return back, उस टाइम आपका कोई रिलेटिव आपके पास आके बोलता कि मैम मैंने ना एक स्टार्टअप सौम्य स्टार्ट कर लिया है एंड उसको ना मैंने स्टार्टअप इंडिया के साथ रजिस्टर कराना है, तो डू यू नो समबडी हु कैन हेल्प मी विद इट? अब फर्स्ट माइंडसेट क्या आता है, यार मैं किसको जानती हूँ जो ये काम कर सकता है। अब स्टार्टअप इंडिया का कॉन्सेप्ट इज वेरी न्यू, मेनी लिमिटेड पीपल नो इट। अब अगर वही सौम्या घर पे होती और अभी उसने सबैटिकल ले रखा होता फॉर सम रीजन, सौम्या वुड have recommended somebody else. But the change in mindset सौम्या कब आता, जब आप बोलते मैं ही कर देती हूँ यार, I have also obtained this degree. It's about reading the law and reading the requirements under this particular segment. Right. वो सब prepare कर लेते हैं and कर लेते हैं. So despite sitting at home, despite having kids, or maybe despite having say there would be people who would be shifting from one job to another, बीच में time खाली है, do it. So again, when I come back again to Startup India, I again see a chartered accountant preparing the projections. While preparing those projections, following the requirements of Schedule 3, because how it has to be presented. Then when I am preparing the strategy for the business, which has to be uploaded again on that particular portal for registration as a startup, then again I use my sense and I use the Companies Act to understand how the entity has been structured and how it will be structured in the later times, how equity has been pooled, whether do I have an ESOP pool, whether I have some investor pool, whether I have the promoter pool. And guys, when I say this, I'm also a mentor with the Startup India, and please trust me, it's not difficult. It's an easy task. You guys can do it. Now after this, when I was talking about chartered accountants as independent directors, हो सकता है आप में से बहुत लोग हों भी, बट जो नहीं है, what do we chartered accountants as independent directors bring to the table? We bring the ability to bring objectivity to board decisions. We bring the common interest of the company together, putting them before the promoters, putting the small shareholder before the promoters, foster improvement in corporate governance, क्योंकि हमें लॉ पता है, तो हमको पता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के एथिकल स्टैंडर्ड्स को कैसे हमको फॉलो करना है। अगर मेरी कंपनी की सीएसआर पॉलिसी है तो उसको कैसे स्ट्रक्चर करना, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गई, क्या क्या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है सब पता है। I don't really need to go anywhere else. So, and whatever my auditor would say, I'll understand. Whatever my CFO will say, I'll understand. Whatever the other directors will say, again, I will understand. Why? Because I've dealt with a lot of people in different businesses, maybe as auditor, maybe as consultant, maybe as tax advisor, or maybe even for tax audits. So I have dealt with a lot of businesses and their structuring also. So ये crucial role है जो एक in general as an independent director in particular, अगर आप बोलो chartered accountants play कर रहे हैं, कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें एज KMP की कैटेगराइजेशन जब अगर कंपनीज एक्ट में आती है, उसके अंदर सबसे पहले तो ये डेफिनेशन आई ही कंपनीज एक्ट 2013 में है। 1956 में KMP की डेफिनेशन थी ही नहीं, उस टाइम हम लिस्टिंग ग्रीवेंस से उठाया करते थे, और उसके बाद LODR 2015 बाद में आया। नाउ वो जो लिस्टिंग कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 203 है, व्हिच टॉक्स अबाउट KMP, CFO को इंक्लूड करता है, एंड CFOs मोस्टली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं on the top. This legislative requirement for statutory disclosures by professional accountants relating to the financial affairs of a corporate are spread across a large number of statutes, including Companies Act. और वो सारे लॉ किसको पता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट को पता है। तो हम अपने आप को सिर्फ एक मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर और मे बी a team leader
different organizations have different designations. वहां पर देखकर नहीं एक CFO के लेवल पे भी जा सकते हो. And I know people who are just 28 and they're CFOs of well-doing startups. This guy hails from Bihar, had a few years of his upbringing in Kathmandu. After that, he came back to Delhi. Currently, he's putting up in Gurgaon, and his entire family shifted here finally. He's a chartered accountant, only 28. CFO of a well-renowned startup. तो अगर 28 साल का लड़का भी ये कर सकता है, तो यंगस्टर्स भी कर सकते हैं. And जिनके पास एक्सपीरियंस है, of course there are no leaps. You can go leaps and bounds further ahead. Then section 247 की मैं बात करूं, 203 के बाद 247 पे आ जाओ, क्योंकि उससे पहले हम 149 पे थे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स में. तो नंबर वाइज चलो तो सेक्शन 247 रजिस्टर्ड वैल्यूअर. अब सिक्योरिटीज एंड फाइनेंशियल एसेट्स के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट सबसे अप्रोप्रिएट क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि हमारे पास अगर कोई वैल्यूएशन प्रॉपर्टी से रिलेटेड होनी है, स्टॉक से रिलेटेड होनी है, शेयर से रिलेटेड होनी है, डिबेंचर से रिलेटेड होनी है, सिक्योरिटी से रिलेटेड होनी है, गुडविल से रिलेटेड होनी है, या कोई भी एसेट की अगर बात करो, या नेटवर्थ की कैलकुलेशन बोलो, लायबिलिटीज की कैलकुलेशन बोलो, कंपनी से रिलेटेड, तो वो सारे के सारे कैलकुलेशन करने के लिए जो पीछे रिक्विजिट क्वालिफिकेशन चाहिए चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास है ही है. The other professions can do it. They are coping up with it. Trust me, we are coping up with it. You guys have that requisite knowledge. आज की डेट में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को जब रजिस्टर्ड वैल्यूअर अपॉइंट किया जाएगा और उस प्रोसेस में जब वो वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स पढ़ेगा, तो उसके पास एक बैकग्राउंड होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ने का, उसके पास बैकग्राउंड है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ने का, उसके पास बैकग्राउंड है बैलेंस शीट बनाने का, तो उसको सारे अमाउंट्स कैसे आए हैं वो सब पता है. तो एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर की तरह उस अमाउंट को कैसे इंपोर्ट करके वैल्यूएशन में लेके जाना है वो भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को पता है. दैट इज वेयर सेक्शन 247 में यू गाइस हैव अनदर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर. देन लेट्स कम टू सेक्शन 275 ऑफ द कंपनीज एक्ट, प्रोविजनल लिक्विडेटर और द कंपनी लिक्विडेटर. इसका भी पैनल ना मेंटेन करती है सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम. उसके अंदर भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास अपॉर्चुनिटी है. एडवोकेट भी हो सकता है, कंपनी सेक्रेटरी भी हो सकता है, कॉस्ट अकाउंटेंट भी हो सकता है. बट लिक्विडेशन के बारे में किसने प्रैक्टिकली केसेस कर रखे हैं? लिक्विडेशन में कौन सी पेमेंट को प्रेफरेंस मिलना है, कौन से को नहीं मिलना है, उसकी अमाउंट की कैलकुलेशन कैसे होनी है, और उसके बाद ऑडिट में उसमें बाद में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उसको कैसे चेक करके आगे मूव ऑन करना है, वो काम कौन बताएगा? वो काम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से बेटर किसी को नहीं पता. और मैं भी अगर बन जाऊंगी ना, मेरे को एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने साथ अलाइन करके रखना पड़ेगा कि सर आप मेरे को बताओ जी कि ये चीज कैसे होगी. एंड दैट इज ऑल्सो द रीजन व्हेन आई एम सेइंग दिस, लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल. An IP also cannot function alone. An IP needs a team, sir. And when an IP needs a team, he has a chartered accountant, he has an advocate, he has a company secretary, he has a management consultant, and he has n number of other consultants allied to him. पर जहां उसके पास वो चार्टर्ड अकाउंटेंट खुद है ना, उसका सीए खत्म हो जाता है, या मे बी अपनी टीम के लोगों को वो साथ में रखेगा जरूर, वहां पर he will need people. But being a chartered accountant gives you an edge when you become a liquidator or provisional liquidator in case of the company. Next, professional assistance to companies की मैं बात करूं. Section 291. Section 291 of the Companies Act 2013. The company liquidator may, with the sanction of the tribunal, appoint one or more chartered accountant on such terms and conditions as may be necessary to assist him in the performance of his duties and functions. Specifically talking about chartered accountant in section 291. पर ये हम भूल जाते हैं. Next, right to legal representation. चलो, since we have members present here, आप में से कितने लोग कभी NCLT या NCLAT के सामने appear हुए हो? I'll not talk about tax departments, but NCLT or NCLAT. Allahabad benches in CIRC, Indore benches in CIRC, Kanpur again we have the CIRC. So Allahabad or Indore bench have appeared. So let's quickly talk about कि भाई यहाँ पर कहीं आप लोग appear हुए हो? Anyone. I think we do have a chat box. Chandigarh NCLT, Natasha.
Okay, Natasha, being a chartered accountant, does that give you some edge? Natasha को हम लोग voice on कर सकते हैं? Soumya, could we have her voice on? Yes, ma'am. Unmute her, please. I think Natasha, you have to do it from your end. You have already allowed. Natasha, could you talk to me about your experience of appearance at NCLT? Okay, I think she's still unable to do that. She So, hasn't I unmuted come from her side. right. So we have one member here who says that she has had the experience of appearing before NCLT. Now, do I really need another separate qualification to appear before NCLT? No. What I need is my chartered accountant's degree and the fact that I'm into practice. If I say, मैं अगर कोर्ट के सामने एज एन एडवोकेट प्रेजेंट हूँ, मेरे को वकालतनामा चाहिए, वहां के लिए मेरे को मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस चाहिए, जिसके लिए एनसीएलटी रूल्स के अंदर फॉर्म एनसीएलटी 12 है, जो स्पेसिफिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स के लिए है. So take authorization from your client, white board resolution or white power of attorney, file form NCLT 12, and you can appear. There is no rocket science to it. You just need to understand your client's case and you can present it well. वो कम्युनिकेशन स्किल चाहिए और वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्लाइंट्स केस चाहिए. उसके अंदर एनसीईआरटी में मैटर्स कौन से जाते हैं? एक आईबीसी के जाते हैं, एक आपके कंपनीज एक्ट के जाते हैं. अब कंपनीज एक्ट के अंदर अगर मैं आईपी हूं तो भी मेरे को अपनी रिप्रेजेंटेशन करनी पड़ सकती है. आई कैन हायर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट टू रिप्रेजेंट एन आईपी एज वेल. An IP does not need specifically an advocate to represent himself. Same is the case for an operational creditor. Same is the case for a financial creditor. Same is the case when a company voluntarily goes and says, "Bhai, खत्म हो गया, bankrupt, insolvency file करनी है. I don't have money to pay my debts. I don't need an advocate per se. Until and unless there's a situation that I don't understand the law, जिसका play उसके बीच में आ रहा हो, then maybe I can align an advocate along with myself. I'm an advocate. I'm still saying this because I do have my husband who does appear before the Delhi bench and Chandigarh bench. And trust me, that it isn't difficult. It has happened. I'll quote an instance. It once happened that myself and my husband both were at NCLT and we had a hearing which was clashing around the same time. I knew there was one set of arguments which was to happen at NCLT, and those were the final arguments for that matter. I stayed there. He moved to NCLAT for a matter, that is the appellate tribunal. And it was a matter before the chairperson of NCLAT. Mukhopadhyay ji tab head kara karte the, and mere husband CM ko Dugar. So he went to NCLAT and suddenly Mr. Mukhopadhyay started asking certain questions from the documentation. Trust me, he said, is this check reflecting in the bank statement of your client? He said, my lords, I'll just check it. देखा, check reflect कर रहा था. अच्छा, एक होता है शायद आपका check issued but not presented. उस पॉइंट के ऊपर पूछने लग गए. अब चार्टर्ड अकाउंटेंट से बेटर कौन बताएगा जी, बैंक रिकंसिलिएशन के टाइम करते हो, check issued but not presented. मेरे को भी ऐसे इश्यूज होते हैं, मैं पहले बैठ जाती हूँ, पहले समझा दो ये बैंक स्टेटमेंट और उसके बैलेंस शीट में क्या हो रखा है. He did not have to ask anybody. He could see the bank statement, he could see the records of the company, and he could tell what is the current status of that check. He was then asked, will you rely on this check? It was his mind which clicked because he had read law. During the curriculum, when he was studying chartered accountancy, that he said, I will not rely on this check. And that's where we had more than 50%, the judge had already gone in our favor. So this was a chartered accountant who handled a tricky situation uninvited at NCLAT. And I was still doing arguments at NCLT when he comes and tells me, interim order aa gaya ji. I'm like, there was no interim order. He's like, I've got it.
well and good. Because of that one particular check, when we did not rely, he gave us an interim relief. We were pressing for over last 2 hearings. Now that is where a chartered accountant made the point before chairperson and plat. If he can do it, why not you? It's just about thinking that it's not just about income tax department. It's not just about GST department. I don't say that please don't do it. It's part and parcel. बट एक नया एवेन्यू जो है पिछले 4 साल से रह रहा है, कितने लिमिटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपीयर कर रहे हैं और कितने सारे कर सकते हैं. हर कोई अपना क्लाइंट रिप्रेजेंट कर सकता है अगर लॉ पता हो तो. बस सिर्फ ये पता होना चाहिए कि उस डॉक्यूमेंट को डालना कैसे. अच्छा, एक चीज और, घर बैठे कैसे कर सकते हो? घर बैठे भी कर सकते हो क्योंकि फाइलिंग ऑनलाइन होनी है. एनसीएलटी की फाइलिंग का पोर्टल ऑनलाइन है. nclt.gov.in पे जाओ, ई फाइलिंग का पोर्टल साइड में रिफ्लेक्ट करेगा, उस पे जाओ, अकाउंट बनाओ, अपनी मेंबरशिप की डिटेल डालो, एंड देन यू कैन गो अहेड एंड फाइल योर क्लाइंट्स डिटेल. सेकंड, considering corona, courts have been functioning virtually since the last 2 years. And abhi fir ek notification recently aayi when they said that we'll be taking up matters virtually and only urgent matters. But that does not preclude you from not filing the matter. अब फाइल करो, ड्यू कोर्स में मैटर हियरिंग पे आएगा. और अगर एक मैटर भी चल रहा हो, चलो आपने एक मैटर से शुरुआत करी, उस एक मैटर के लिए एक दिन में अगर आपको जाना पड़े, हफ्ते में, और कभी कभी तो 1 महीने में एक बार हियरिंग लगती है, उसमें भी अगर आपको जाना पड़े, so what's the harm? You start a new practice area for yourself and for your firm. And maybe if you are coming back to work after a long time period, पर आपको लॉ पता है और आपने इस ड्यूरेशन में अपने आप को अपडेटेड रखा है, then it's just the point of hesitation which comes in you. वो हेजिटेशन साइड करो तो वापस जाओ और शुरू करो. अब इस पे मैं एक और चीज बताती हूँ. One of my sister-in-law is a chartered accountant based out in Guwahati. She got married, she took a sabbatical for 3 months. Now, prior to this, she was in job. Now she was thinking of starting to practice. Now, when I was talking to her, I was like, Garima, छोटी है मेरे husband से. I was like, Garima, करना क्या चाहते हो? कहते भाभी, I want to do practice now because पता नहीं कैसे मैनेज होगा, ऑफिस ढूंढना पड़ेगा, करना पड़ेगा. So we said, okay, ठीक है, आप अपना खुद का फॉर्म स्टार्ट करो. कहते क्लाइंट्स कैसे आएंगे? मैंने कहा चल, मेरे गुवाहाटी का ऐसा मैटर आना है, यू टेक इट अप, डू इट. नहीं भाभी, हो नहीं पाएगा. उस लाइक, तो पहले माइंड से ये बात निकाल के हो नहीं पाएगा. कहती है रिप्रेजेंट कैसे करूंगी? रिप्रेजेंट करने के नाम पे एनसीएलटी के बेंच में आपको मैटर्स करने के लिए कोचिंग नहीं दी जाती. कहीं से कोचिंग क्लास नहीं प्रोवाइड होगी कि सामने जज बैठा है और ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं. नो, यू कैन गो, यू कैन अटेंड लाइव हियरिंग्स. कीप योरसेल्फ ऑन म्यूट, keep your cameras off. You can see how judges are asking questions, how an advocate, a senior advocate, chartered accountant, or whoever is appearing, how they are presenting the matter. And virtual के अंदर benefit ये भी है कि हर किसी की pleadings काफी बार सामने आ जाती हैं when screen share किया जाता है. तो screen share में drafting का भी आपको आइडिया लग जाएगा. तो उस चीज के बाद she took up one NCLT matter. Luckily that was a financial creditor matter under IBC. उसके बाद एक ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का मैटर किसी और ने, जान पहचान वाले ने दे दिया, बिकॉज पता लगा कि IBC NCLT का काम कर रही है. So that's how now she's developed her core in the last 1 year to be in practice as a chartered accountant and undertake matters of NCLT. And trust me, उससे पहले उसने कभी अपीयर नहीं करा था. उसको मैंने अपने 1-2 हियरिंग्स के टाइम वर्चुअल वाले का लिंक दिया, तो मैंने कहा देख ले भाई, नॉट जस्ट मी, सी दी अदर्स एज वेल, ऑब्जर्व, मेक योर नोट्स, मेक योर पॉइंटर्स. काफी बार ऐसी जजमेंट्स बोली जाती हैं और स्क्रीन शेयर हो जाती हैं कि आप उस टाइम उसकी कैमरा आपको ऑफ है, दे डोंट रियलाइज व्हेन यू आर टेकिंग अ पिक्चर. टेक अ पिक्चर, गो थ्रू दैट जजमेंट लेटर, अपडेट योरसेल्फ, स्पीक इट आउट एंड डू इट. So those are some specific pointers probably per se जो मैं कहना चाहूंगी when the right to legal representation under section 432 of the Companies Act comes to you chartered accountants. And it's just in the mind now that you think कि यार एक advocate कर सकता है. नहीं, Companies Act के अंडर, IBC के अंडर आप भी कर सकते हो. अच्छा चलो, एक चीज और बताती हूँ, एक पॉइंट दे रही हूँ, कर सको तो करना. A lot of companies have got struck off again.
across India. The list is available on the MCA website. Go ahead. पता चले किसी की कंपनी strike off हुई है, make that application, file that application online. After that, virtual hearings के अंदर present that matter. It's not that difficult. It's one of the easiest set of matters जो कि NCLT में हो रहे हैं. आप ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट करके ले जाओ, वो क्लाइंट आपको सिर्फ कंपनी रिवाइवल ही नहीं, उसके बाद ऑडिट भी देगा, उसका टैक्स भी देगा, उसके अकाउंटिंग भी बोलेगा, और उसके रिगार्डिंग जितनी उसकी कंसल्टेंसी होगी सबसे पहले आपके पास आएगा. क्यों? क्योंकि पिछले वाले ने काम खराब करा, इसलिए स्ट्राइक ऑफ हुई है. आप बचा के दोगे, हाथ जोड़ेगा, पैर जोड़ेगा, फीस भी देगा और सारा काम भी आपसे कराएगा. With that, I think I've talked too much on opportunities for chartered accountants and the mindset probably that we need to per se make a change of, because at the same time I've been monitoring on the time and so kuch 12 minute bache hain. So in case if there are queries from the members, I would go ahead with that also, because kahin na kahin experiences prior or experiences mine or theirs is what is going to enrich the others as well. So I would take that leverage now. I suggest you to kindly guide the members, because there are another opportunity. There is another opportunity in companies. If you remember, there were the opportunities under Section 25 of the Companies Act 1956. Now these opportunities have emerged into Section 8 of the Companies Act 2013, where the chartered accountants can ask their clients who are trust or societies. They may get their trust or societies converted into Section 8 companies, so that whatever the client is investing as a capital, that shall be identified as a share capital. Because if someone is starting a trust, then whatever is going into the corpus, and there is no ownership of that corpus. The ownership of that corpus is lying with the trust only or with the societies only. So what the best part can be, if they suggest to their client, instead of going for a society or a trust, if they can go for formation of Section 8 company, then in that case, whatever investment is being made by the client, that shall be identified as a share capital. So that share capital can be transferred to the legal heirs also. Let's say if I am incorporating any trust, investing 10 lakh rupees into that trust, and that 10 lakh rupees is a share capital, then after my life, that 10 lakh share capital shall be transferred to my children or maybe great grandchildren also. So the ownership of my family will continue. So this is another opportunity where we can discuss about, like, we can guide to our clients instead of getting incorporated societies under the Societies Registration Act 1860 or getting the trust registered under the Indian Trust Act. If we go for incorporation of non-profit organization under Section 8 of the Companies Act 2013, then we would be having professional opportunities not only for incorporation of Section 8 company, but also the audit and accounts, as Rimaji has also mentioned. Like if we are reviving a company which have been strike off maybe because of non-filing or maybe due to other reason, then again we can appear before the NCLT and we can get it revived. So this is another opportunity. This is another option which we can think of. And apart from that, Rimaji was talking about Office of the Liquidator, where you may go for a liquidation and all. Apart from that, Office of Liquidator is appointing the chartered accountants for settling the claims. I'm sure you all must be aware, there was a time where people were investing into the fixed deposits of different companies, and the companies were accepting the money as a fixed deposit, but issuing the receipt as a share application money or share capital. So lots of disputes are still pending with Official Liquidator's Office, and they are again hiring the chartered accountants or advocates or company secretaries for settling that claims. And if you go, then again they pay good amount. But again, your sense as a chartered accountant, your understanding whether this is the fixed deposit or it is a share capital, your understanding that works. And I'm sure, and if you start working for that, then in my opinion, chartered accountants and company secretaries are the right person who understand the terminology also. Because while we talk about deposit, there is a very specific definition of deposit. And you can understand the definition of deposit once you know the law. And company secretary and chartered accountants, as both of them are reading company law on an everyday basis, so I'm sure you would be able to do the justice. And that is again an assignment which is being given by the official liquidator, Office of the Official Liquidator,
to the professionals also. So it has been rightly pointed out by her that official liquidator, office of the official liquidator is also giving lots of opportunities for the chartered accountants. And believe me, friends, I started my career in company law only. I did my articleship in company law. That I'm talking about in 95. I started my career in company law only. I was involved in company law services only till 2007. And from 2007 onwards, I got involved myself into income tax and audit and assurance services. But from 96, when I qualified, until till 2006, my core area was company law, whether you talk about incorporation of a company or filing of cases before the company law board, because before NCLT, it was a company law board, or you talk about permission under section 297, or you talk about permission under section 295, or you talk about there was another area, if any company is willing to go for taking permission for charging depreciation at a lower rate, then again there was a specific route that you have to go with the Ministry of Corporate Affairs to get the approval. So you can explore more and more opportunities in the company law. And my request to all of you, what all your doubts and questions you are willing to ask, kindly raise your questions, because this is the right opportunity. Reema ji is here. And after practicing as a company secretary, now she is practicing as an advocate and appearing before the various courts, not only into the NCLT, but also NCLT. So you would be getting more and more insight about the professional opportunities in 2013, because I'm zero in Companies Act 2013. I never tried to read. As far as Companies Act 1956 is concerned, I was aware about each and everything, but I'm not aware about Companies Act 2013. And I never thought to read again or to become an expert into that. One thing is, I feel if you talk about due diligence, nowadays banks are also asking for due diligence reports from chartered accountants. And that you can do only if you have a good knowledge of a company law. Can you just enlighten the members, Reema ji, regarding the due diligence report? Right. So since this is a very valid point again that sir is talking about, but until some years, sir, sahi bolun to there was a requirement that they used to take due diligence report from company secretaries up to the limited time period. But now, yes, of course, that has also come up as an opportunity. And yes, since many few know about it, many few out of those many few go and undertake this particular assignment. Now, what happens is when you talk about this due diligence report, they talk about your borrowings, they talk about your fixed deposits, they talk about your compliances, whether there's any related party transaction, whether there is any promoter contribution, promoter borrowings, or there is any, say, any other compliance which was supposed to be undertaken on a particular due date, but it has occurred later. So this is something which they are asking. एक तरीके से जैसे आप ऑडिट करते हो, वैसे यहाँ पर कंपनी सेक्रेटेरियल ऑडिट एक मिनी करवा देते हैं वो आपसे, और उसकी एक रिपोर्ट जब आपको छापने को बोलते हैं, so that becomes easier. And you guys are again, as sir says, you have sense to understand law. And when I say this, sir, please, though you mentioned here that you haven't read Companies Act 2013 or you're not willing to, but I think something here which comes is a lot of things have come out of 1956 law itself. I also read 1956. Trust me, I read 1956 when I was giving my examination. And as soon as I transgressed from becoming a student to a company secretary, the law changed within the next 1 year. So it was difficult because studied 1956, read judgments on 1956, appeared before company law board on behalf of my company when I was doing my CS internship, 1956 law again. But 1 year later, it comes to 2013. It's just about, there may be many others here who are attending and having the same thing, that we've read 1956 and 2013, maybe we've not gone through all of these sections. It's just what is the difference or what is the gap in the middle of the two provisions, and whether or not that provision exists today or not. Just like sir was talking about this depreciation thing, this was new to me, because of course in 2013 we've never seen any this kind of a provision under the Companies Act 1956. I didn't have the opportunity to get into that particular process, that in case if you need to charge a lower rate of depreciation, go to the Ministry of Corporate Affairs and take a specific approval. So I think this act we do not have it. So a lot of such sections have gone away. Like 247 is specific, which has come up new. 447, 448 specifically put up again,
alag se. Then a lot of then if you say then say winding up company have been taken out from here, voluntary liquidation has been taken out from here, and it has gone to the IB code section 59. So a lot of things have changed, but the base of the law stays as it is, and it comes from 1956 itself. So it's about just updating yourself even in terms of 1956 to 2013, and it's not much of an effort initially if you take up say to start with one particular area. Second thing, sir said he started his practice with the Companies Act and company law practice for good 1992 आप शायद बोले 95 से 2006 तक. Yes. है ना. तो 11 साल उन्होंने कंपनी लॉ का काम किया है. उसमें उन्होंने सबसे पहला वर्ड बोला इनकॉर्पोरेशन. पर मैं आज एक चीज बोलती हूँ, डू नॉट लिमिट योरसेल्फ ओनली ऑन सर्टिफिकेशंस. Advisory under Companies Act is a huge area, and there are very limited people. If you update yourselves, if you're reading the judgments, if you're reading the circulars, if you're reading the notifications, if you're reading what's happening day in and day out, जिसके लिए ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट बहुत मेजर एरिया है, वो भी एनसीएलटी के अंदर आता है. मेरे बोर्ड में डिस्प्यूट हो जाए, मेरे शेयर होल्डर्स में डिस्प्यूट हो जाए, टाटा मिस्ट्री इज अ क्लासिक एग्जांपल गाइस. तो उस टाइप की चीजें अगर आप पढ़ो और अपने आप को अपडेटेड रखो, आप क्लाइंट्स को बहुत एडवाइजरी प्रोवाइड कर सकते हो. एंड फॉर दैट you don't even need to spend on a DSC, because काफी बार लोग बोलते हैं DSC ले लेंगे, क्लाइंट का असाइनमेंट नहीं आएगा, क्या करेंगे. वो भी कॉस्ट है भाई. लैपटॉप आपके पास घर में है, पढ़ो, अपडेट करो. एक आप अगर एडवाइजरी भी उनको बना के देते हो ना, यू कैन इजीली चार्ज मिनिमम फ्रॉम से डिपेंडिंग ऑन योर क्लाइंट, मिनिमम टू मिनिमम हर क्लाइंट इज रेडी टू पे 11,000 to 15,000 per opinion. Could range up to ₹1,00,000 also, and more than that depending on what is the level of that opinion that you provide. But you should be aware of that specific area. So do not specifically, ये अतुल जी ने भी मेरे को कुछ टाइम पहले एक बात बोली थी सर, आई थिंक लास्ट सेमिनार की तो बात नहीं होगी, बट आई थिंक साल 1.5 साल पहले अपनी कभी बात हुई थी, एक सेमिनार अपना हुआ था, नोएडा का था शायद. तब सर ने ये बात बोली थी वहां पर कि भाई gone is the era of certifications. Advisory role is far better, because the way the section 447 and 448 play, and SFIU comes behind you. Developing yourself on the advisory side, your client would trust you more. So I'm here repeating sir's words again, that developing yourself on the advisory side is more important. And that would not take anything out of you. That would just enrich you. So any questions, I'm still here. And till the time the questions do not get solved, or in case if you want to ask on a particular aspect also, I'm here. And once it's done, only then I'm out. There is only one question from anonymous attendee, Nimaji. Ma'am, can you Right, please sir. talk about ways to get clients other than aligning with different firms? So what I understand, there is no such easy way to get the client. As on date, networking is more important, whether within the profession or out of the profession, whether you do the networking within the chartered accountants or with the company secretaries or with advocates or with other professional colleagues, because everyone cannot be an expert into the every subject, and you have to have your own expertise. And once you develop your own expertise, client will come automatically. There is no shortcut method to get the client. Your can say your dedication, your knowledge, and your expertise can only give you a client. So if you think that on a day one you will get a client with good money, handsome fee, that would be difficult. You have to create your own value, and that value you can create only if you have an expertise on a particular subject. It is true that we cannot be expert in all subjects, but one thing is very important, especially for we all professionals, either the chartered accountants or company secretaries, that we should have the knowledge of each and every subject. Then only we would be able to give the correct audit and assurance services. Otherwise, it would be very difficult. And we must have a proper team. If we have to examine the GST issues, then there must be a proper person who understands the GST. We must have a company association, a company secretary, especially for secretarial audits or verifying the records of secretarial records of a client. We must have the cost accountant who would be able to evaluate the costing part also if it's a listed company, and if it is a requirement to verify the per unit cost as well. So friends, what I believe, it is a time where we need to think in terms of networking instead of thinking standalone.
And if we start thinking in terms of networking, we would be able to do wonders. This is the profession where opportunities are endless, but yes, we need to think beyond audit and assurance services. This is what my submission is. And if we start following this theory, I'm sure in the time to come, we will never have any kind of hue and cry related to date extension, related to the quality of work. And yes, rightly said by Rima ji, let us focus on advisory, because that is again more important. Audit and assurance is becoming risky day by day. So you have to be more vigilant. And while you are vigilant, then you have to increase your quantum of fee as well. So as and when there is an increase in the risk in any particular assignment, your volume of fee must be substantially higher. But we are always compromising on the fees part. That is something which is devaluing our profession. So we have to take a oath that if we would like to really evaluate the profession in a perfect way, we have to be committed for the profession. We have to have dedication, and we have to have expertise in our knowledge. So I'm really thankful to you, Rima ji, for your valuable time, and you have given an insight so much. Professional opportunities in a company law to all the members. And I'm sure especially the women members who are sitting at home and looking for more and more opportunities, even if they take out 3 hours in a day, and if they align themselves with any chartered accountant or company secretary who might not be dealing in the company law, they may get at least they may start their working maybe from filing of balance sheets, annual returns, and one more thing in company law, drafting balance sheet in XBLR form. That is again another expert knowledge is needed. Every chartered accountant is not expert in converting a balance sheet into the XBLR form. So if you start working even on XBLR, converting balance sheet on XBLR form, then again you may fetch good amount of income, and then again the role of networking comes in picture. I'm really thankful to you, Rima ji, for your wonderful deliberation. Now, Thank you so much. over to Soumya for further proceedings of the session. Thank you so much, Reema ma'am. This was really an enlightening session on this end, and of course, I'm sure कि आपने बहुत practical aspects discuss करे हैं, जो actually day-to-day affairs में हमारे काम आ सकते हैं, and also for the women members, you have very much given such relatable examples to which we all can relate to, and I'm sure this would be a value addition to most of us there. And so with this, I would like to thank Atul sir, also Reema ma'am, Pooja, and Nilesh sir, and Chandrasekhar sir also for giving their valuable time and having such a righteous seminar for this virtual session. So we have our secretary sir, C. Shashikant Chandra. So yes, we can invite him for formal vote of thanks. Shashi bhai? Yes, sir. Shashi bhai? Sir. Yeah, for formal vote of thanks, please. Thank you everyone. First of all, I would like to thank Chairman of CIRC, Nilesh Gupta sir, for giving us the chance and opportunity to interact with all of you. And I very much thankful for arranging this seminar to CA Atul Agrawal sir. And I am very much thankful to Soumya ma'am for nicely moderating this session, and most of all, Advocate C.S. Reena Jain ji for very nicely elaborating the professional opportunities in Companies Act 2013. And also would like to thank C.A. Pooja Gurwani ji for startup and way forward for new opportunities. And most of all, I would like to thank each and every participant to joining in this session, and my CIRC officers and office staff for organizing such a wonderful seminar. Thank you very much for attending this session. Thank you. Thank you. Should I close? Yes, absolutely.